We will start in a couple of minutes. In the meantime, if any one of you want to share your side of journey or want to talk on today's topic, you guys are more than welcome. Hey, I normally like the kind of spaces you host. I join. You can explain what you mean. Are you talking specifically to stock market or other market? Debasis, sir, am I audible? Yes, you are. Yes, you are. You were saying something, I missed it. There was some disturbance. Yeah. So when you say value or price, you can explain that and essentially, are you talking the stock market? Are you talking all markets or I mean specific to Yeah, which? yeah. In the context of stock market. Okay. For me, it is always value. And if you're looking at value on a 1 minute basis, which you do as a day trader, then you're looking at price. That's it. So, investment sutra, you have will see. It's a normal informal spaces. So, anyone who want to contribute or anyone who want to ask, they are free to send in the request, or they may come in and answer the queries, or maybe share their experience. So, let's go. So, investment sutra, if you have any, but yeah, guys, everyone is requested. Kindly keep it short so that we can move on to speakers frequently, because at times longer time that becomes monotonous. So Samarth and Wealthworth, I'm sending in the request. So kindly accept the request. Hello, am I audible? Yeah, yeah. Yeah, basically, price is just is for the traders and basically perception, and value is for investors and the earnings. Basically, that is the difference between the value and price. So, otherwise, there is so much on it. So Samarth and Vajpayee ji, if you guys have received the request, kindly accept. See, I am much into reading investing books, so there are several books. So they clearly say, means market is, there are two type of people in market. One are speculators, and the other ones are investors. So when we say speculators, those are categorically like know nothing investors, or maybe the trading fraternity. So it's in general context. So basically, investors purely are know something or know more than others kind of investors. So as Buffett used to do, he used to look for value in the business rather seeing the price directly. Price is the last thing that he used to see when his analysis on value has been completed, so as to find out the margin of safety being available. Ankit, I have also sent you a request, so if you're free, kindly take it up. So Samarth यार ऐसे ही So, informal. Yeah, they, yeah, sir. so Prince, since you started off, so I'll give you my perspective here. 12 years back, just to teach my son the stock market. So what I've done over, let's say, last 20 years, and when I got married and then I had children, I used to buy 10 grams of gold.
right, on their birthdays and my marriage anniversary. So basically 50 grams of gold every year. Now, I understood this as a practice which Baniyas would do in North India. And though I'm not a North Indian originally, that is what I did. And I'm talking about gold, early 2000s and all, right? But gold doesn't move, and then it moved. So, and then when I was trying to teach my son the stock market before 2010, what I did was I bought. He used to get money from his grandparents, so I bought 10 shares of TCS and I bought 10 shares of HDFC Bank. They were both, I think, less than 500 rupees then. Just to kind of make him understand that this is how value is. And then I worked in the corporate, so I've become a trader. I'm a very newbie trader to that extent. But generally, I've been an investor, small time investor, because if you're a salaried guy and your focus is your job, whatever savings you have, you're trying to throw back in order to make. So let's put it this way: um, when I was, about 35, 33, I decided on three priorities in life, and I one of them was to decide to, uh, you know, decide to. So, what were the perspectives? I'm just sharing that. One of the perspectives was to prepare for my retirement. Okay, and the issue which came into my mind was, which I realize now is actually much more relevant, is that if you're so my I'm like on the wrong side of 40. Okay, and my father is both my parents are 80 or more than 80. Now, if you are going to live as long as your parents, because hopefully, though I doubt, because we are, much more indisciplined in terms of sleep and food and exercise as compared to our parents. Let's say that we have good genes and we live more than 80. Let's say we live close to 90. The question you have to ask if you are the other side of 40 is that what do you do? Because if you're in a job, now look, my father happened to be in the Air Force. He's a Veer Chakra in the Air Force. He gets a pension of 1.67 lakhs a month as of today's date. That's a huge amount of money, right? And he's staying in his own house, which he bought in the early 60s. Uh, so the point I'm trying to say, and because he's a Veer Chakra, he doesn't pay income tax. There's a section in the income tax which exempt gallantry award winners. So he's getting 1.67 lakhs of cash as of today's date. His medical expenses are taken care of because of ECHS. And these questions came into my mind saying that whatever I do, why do I do it? That fundamental question has to be asked. So, from my perspective, if I'm going to live till age 90, then I need money. Me and my spouse need money first, even if you have a house. Because later on, you want to give it as something to your grandchildren or whatever. You need money. And you need money for health, basically, for someone to help you when you're old. Maybe you would like to travel, right? I have dreams of traveling at a certain. I have traveled extensively. I have dreams of traveling much more. So all of those. So you need money. So the question was, how do you build up that corpus? And when I started thinking about that, that is the time when I decided to quit my corporate job and try to experiment as a startup, which failed at a very late part of life. Now, when you look at value, what I realized also, because I worked extensively in the telecom sector and the IT sector, though I'm a CA by training, I worked in sales. Uh, what I realized is that Indian companies are increasingly the लाला जो होता है ना, आप किसी को भी ले लो, आप मतलब कोई भी लाला ले लो, वो जो है, he will drive his company towards value investing. What does value investing mean? It means that essentially the way I see it is that if inflation in India is 5%, a company in India will try to get a return of 12% on earnings, which is almost double of inflation. If it is 8%, he'll try to get a return which is approximately 18 to 20%, right? Because he doesn't want to risk. He is worth a couple of tens of billions of dollars, or maybe a couple of billions of dollars, and he is essentially
is not going to be an innovator. So the question, therefore, you have to ask is that what is value and why do you want to focus on value if you're looking at it from a investment standpoint, right? So, for instance, if I bought HDFC Bank, or let's say I bought TCS at less than 500, right? And then I didn't sell the shares. They gave paybacks, and this is over a period of 10 years I'm talking about, right? 10 or 12 years, barely. Uh, so the question you have to ask is that will TCS become 6,000 rupees in the next 10 years? Though right now the sentiment is worse. Uh, in my thesis, if the Indian rupee from 80 becomes 130, maybe TCS will become 6,000. Right. But if the Indian rupee is going to strengthen, which I think it should strengthen, maybe because I'm an India bull, then TCS will not give you 6,000. So therefore, you have to search for value. And value essentially is a company which is giving you an assured cash flow. So when I look at value, so let me give you an example. I worked in telecom in the late 90s because early 90s there was no telecom. Late 90s, early 2000s, on the most of 2000 into 10 and maybe later also. Uh, what I found was so टेलीकॉम में ना ईबीटा बहुत हाई होता है 50% होता है ईबीटा नाउ व्हाई इज टेलीकॉम ईबीटा सो हाई बिकॉज उनका खर्चा जो होता है ना इफ यू लुक एट इट ऑन अ पर मिनट बेसिस बहुत कम होता है मतलब वो एक पैसे से भी कम होता है हाँ उनका खर्चा जो होता है कैपेक्स में होता है एसेंशली 2 3 4 बिलियन डॉलर वो हर साल खर्च करते हैं मतलब 1 बिलियन आप लगा लो 8 करोड़ 8,000 करोड़ है तो आप लगा लो 32,000 से 24,000 या 20,000 करोड़ का खर्चा होता है उनका एंड वो जो जो सो देयरफॉर उनका इबिटा हाई होता है क्योंकि मोस्ट ऑफ द कॉस्ट इज गोइंग टुवर्ड्स कैपेक्स इन्वेस्टमेंट नाउ and the payback is very fast, right? So you have to look at value, and my understanding is because लोग जो कह रहे हैं कि आईटी आज आया है न्यूज में कि कुछ आई थिंक देवसी सर थोड़ा मैं बीच में इंटरप्ट करूंगा विल कम टू यू अगेन वी आल्सो okay हैव स्पीकर्स अदर स्पीकर्स सो दैट वी विल मेक इट मोर इंटरेक्टिव so Ankit you have any views on today's topic like what one should look for value or price. So, first of all, thank you, Prince, for asking me this question. And um I just want to ask you before answering this question, am I going to restrict myself to only value or price, or I can expand my universe here? Yeah, feel free to Yeah, go to it. yeah. So just a brief intro as to what we do and what kind of an investor I am. I am predominantly a fundamental long only investor. I've been investing since last 10 years plus, and I've never done any trading, any F&O. However, one thing which I have realized over the last 3 4 years, 5 years is that there are two things which are very important, not only in investing but also in not only in stock market but also in all parts of our life. Is that number one is knowing yourself as to what you are as a person. That is extremely important, and we don't give ourselves that much time. And second is knowing your objective. What do you want in life, or what do you want in market? Once you have these two things sorted, these value, price, and all things become much less important. These terminologies become much less important. So even though I am a fundamental investor, I completely respect people who follow fundamental momentum or quants or any sort of chart related. Probably all I want to look at is people who are devoting their time and effort in an art and excelling at it. So, and value and price is all in the mind. Why? I'll give you an example. So we all think Benjamin Graham as a father of value investing, right? But if you carefully analyze what he was doing as an investor, he actually was a quant investor, because he actually filtered and made a quantitative analysis and did where he said that I will not look at the business. All I'll be looking at is
if it follows these criteria, I will buy the stock. If it doesn't follow the criteria, I'll sell or I'll avoid. And he had clear cut benchmark rule where if 3 years the stock doesn't do anything or I don't get my desired returns, I'll sell the stock. So those are predefined rules or filters which he has put in his, those were quantitative filters. So that was also a, a type of quant investing, but we hail him as a value investor, right? And later on in his part, where during the end part of his life, he himself said that in the interview, in one of the interviews, that what I said in the early part of my life is not working anymore. So we have to look for new ideas, new way of doing things, new way of investing. So growth investing is one part, momentum investing is one part. We say that trading is speculation, but if you look at it in an objective manner, and if I get out of my shoes of an investor, even as an investor, I am speculating about the future. It's just the time frame. A trader would be speculating about a shorter time frame probably, and I would be speculating about a longer term. So once you look at life and investing and market in that frame, you will tend to attach lower value to these terminologies, and you will tend to respect each other in the market because everyone has his or her role in the market. So just to give you another example, in 2021 there was a flurry of IPOs of new age tech companies, right? And many of the IPO investors, many people lined up, HNI, retail, and there were many middlemen who were talking about these new age IPOs as if you have to right now. Now the problem is, I recently interviewed Professor Sanjay Bakshi, and he said that, and I completely agree with him. He said that IPO investors are people who are doing Samaj Seva for investors like us. If they would not be there, how will we get these kind of companies get listed? Because companies get listed and IPOs happen because of incentive for the promoter and also for a middleman, as in the investment advisor, as in I'm talking about the investment banker. And then there are some investors who are greedy and want to buy it for a listing gain. If you don't have that kind of a mechanism, value investors will never be able to invest in those kind of companies because those companies may not get listed if those promoters or the middlemen don't get their fair share of thing. So as a value investor, you should not make fun of them. Rather, you should accept them as it is and wait for the prices to correct. All the new age companies are not bad investment. In fact, this is right, probably right. If you talk about value, there might be some value in some of those companies today, and you can buy them, right? So that was my only point I thought that I should share with you, Prince. I hope I could make some sense out of. So Prince, what Smart Sync is saying, I actually Smart Sync, is that your name? Can I call you something else? No, this is Ankit Kanodia. I am the founder of SmartSync Services. Devashish. Yeah. Okay. Yeah. So, Ankit, I agree with you because when I look at Airtel, right, I mean, in terms of the IPO price, they were at 45 rupees when they came out with an IPO somewhere in 2001. Uh, then the price went down to 22.50 approximately. These are maybe a rupee less. Uh, this share then got split. So if it is 22 rupees, what you're seeing today as 650 or 660 is actually 11 rupee share in 2001. That's just 21 years back. So what you're saying is true because when I look at value and I'm not seeing value in a TCS, the question is, how do I assess Zomato, right? How do I assess Paytm? Paytm, of course, people are criticizing. So I agree 100% with what you've said. And in terms of IPO, I look at this experience. I've also followed Amazon IPO since 98 or 97. I mean, long time back, right? Now, you should actually do a research on the internet. Say Amazon, Jeff Bezos, pro forma P&L. So what Jeff Bezos said was, because after he came out with his IPO, and he came out with the IPO before the 2001 crash, and you should assess a Zomato or Paytm or anybody else on the same basis as what I think. He came out with something called a pro forma P&L,
हाँ, जो एक तरीके से आप कह सकते हो झोलू टाइप पीएनएल था, बट व्हाट ही सेड बेसिकली इज कि मेरे पास 100 रुपए है, एंड देन ही शोड कंट्रीब्यूशन एट ईच लेवल, एंड ही सेड ईच लेवल में ही स्टार्टेड शोइंग कि अगर मैं ये खर्चा माइनस करूँ तो इतना कंट्रीब्यूशन आता है। ये आज के दिन नेगेटिव है, बट माय एक्सपेक्टेशन इज at levels if the contribution is turning out to be positive, and that is how he showed Amazon. I mean, it's a separate issue. I mean, उस दिन ना लोगों को समझ नहीं आया था. There was high degree of criticism. I'm talking about 2002 and 3, right? Of this basis of showing it. But if you really look at it, that is what a Zomato is. That is how you should be seeing Zomato. You should be saying कि उसका जो contribution है, मतलब अगर वो 100 रुपए बनाता है रेस्टोरेंट से, तो उसके बाद वो खर्चे फर्चे निकाल कर वो किस तरह से अपना कैश फ्लो दिखा रहा है, एंड लेवल पर उसका कैश फ्लो कैसे इंप्रूव हो रहा है, इज द बेसिस ऑन विच यू हैव टू इन्वेस्ट इनटू एन आईपीओ ऑफ जोमेटो. मेहनत करनी पड़ेगी, बट उसी तरह से आप डिस्कवर करोगे, क्योंकि हो सकता है कि आज के दिन अगर 50% आपका एचडीएफसी बैंक में, एचडीएफसी बैंक इज अ सेपरेट फीचर एज कम्पेयर टू टीसीएस. हाँ, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट अगर आपका ब्लू चिप, अगर 70% अगर आप आज के दिन जो हम ब्लू चिप समझते हैं उसमें इन्वेस्टमेंट है, वहां से आप शिफ्ट करना चाहते हो धीरे धीरे, तो आप तो न्यू एज में ही करोगे ना. और न्यू एज को आप एसेस कैसे करोगे? अगर आप मार्केट कमेंटेटर से सुनोगे तो वो तो कहेंगे 40 रुपए जाएगा, 50 रुपए जाएगा, हाँ लॉस बना रहा है, उसने कैपिटल एलोकेशन स्ट्रेटेजी उसकी गलत हो गई. बाय द वे, एयरटेल ने जब एयरटेल अफ्रीका खरीदा था जैन से $11 बिलियन के लिए, मार्केट क्रैश. आई गॉट आईपीओ यार. आई यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ पेन आई मीन आई गॉट sweat equity. The amount of pain I went through in those sweat equity, there was no appreciation because I bought Africa. So all of those factors you will have to consider. Right, Devashish. So, Samarth and Bajpayee ji, you have anything to add on your part? प्रिंस, हेलो Yes, प्रिंस, मैं Samarth. बाहर हूँ अभी. मेरे को Right. 10-15 मिनट दीजिए ना, मैं करता हूँ आपको मैसेज. Right. Yeah, आई विल Bajpayee स्पीक, आई ji. वांट टू स्पीक. Yeah, Bajpayee ji. हाँ हाँ, नमस्कार प्रिंस जी. मैं ये कह रहा था, अगर कुछ हम अपने जो लिसनर्स हैं, जो न्यू इन्वेस्टर्स हैं, अगर इनके व्यूज आ जाते कुछ थोड़ा, तो हम लोगों को बेहतर रहता बताने में. अदरवाइज तो फिर हम अपनी बात रख ही लेंगे. हमारे जो नए लिसनर्स हैं, जो लोग नए इन्वेस्टर हैं, इनका क्या व्यू रहता है, क्या इनका थिंकिंग है, थोड़ी ये भी पता लगनी चाहिए हम लोगों को. ऐसा मेरा मानना था. बाकी फिर जैसा आप कहेंगे तो मैं ही रखता हूँ अपनी बात. आप अपनी बात रखिए, तब तक वी रिक्वेस्ट दी ऑडियंसेस इफ दे हैव क्वेश्चंस, सो देन अंकित, Samarth, Bajpayee will try to answer the best possible manner we can. हाँ, देखिए प्रिंस जी, इन्वेस्टमेंट फॉर लॉन्ग टर्म एक बिल्कुल अलग पर्सपेक्टिव होता है. और इन्वेस्टमेंट इन नॉट इन इक्विटी, इन्वेस्टमेंट इन एसेट क्लासेस जो भी हमारे हैं, चाहे हम लैंडेड प्रॉपर्टी की बात करें, रियल एस्टेट, गोल्ड एंड अपने स्टॉक्स में, तो इसमें सर ऐसा है कि वैल्यू जो है, हम एकदम से वैल्यू को आइडेंटिफाई कर पाए, इतनी क्षमता हमें नहीं लगता कि हर इनिशियल इन्वेस्टर के पास रहती है. लेकिन उसके जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल हैं, उन इंफॉर्मेशन के बेसिस पर हम उसका फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट, उस प्रोडक्ट का, उस कंपनी के मैनेजमेंट का, और इसी प्रकार से अगर हम रियल एस्टेट में जा रहे हैं तो उस एरिया का क्या डेवलपमेंट होने वाला है, कैसी कैसी गवर्नमेंट की प्लानिंग्स आने वाली हैं, इन सब तमाम चीजों पर ध्यान रख के ही हम इन्वेस्टमेंट करते हैं. और अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमें उसमें टाइम देना पड़ता है. अब यहाँ पर चूंकि हम लोग शेयर मार्केट की बात करते हैं, तो देखिए शेयर मार्केट में जैसे समर्थ जी ने भी अभी पिछले स्पेसेस में भी जिक्र किया, शरद शाह साहब ने भी कहा था कि एमएनसी कंपनीज इन्वेस्टमेंट के लिए हमेशा अच्छी मानी गई. रीजन की उनका ही तो मैनेजमेंट में कोई इशू नहीं रहता है, उनके कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर रहते हैं, प्रॉफिट में ही मोस्टली वो कंपनीज रहती हैं, और इन्वेस्टर की फ्रेंडली भी रहती हैं. मैंने कई बार देखा कि अगर फॉरेन कंपनी, एमएनसी कंपनी अगर बाइंड अप भी होने वाली होती है तो वो अच्छे प्राइसेस पर वो बाई बैक कर लेती हैं अपने शेयर को. जबकि हमारे यहाँ इंडियन कंपनीज में इस तरह की स्थिति, जो हाई लेवल की, जो बहुत एथिकल कंपनीज है, उनको छोड़ करके बहुत सी ऐसी भी कंपनी है जिनका कि हमको पता भी नहीं चलता कब वो बंद हो जाती हैं और कब वो निकल जाती है. तो इसलिए हमें देखिए वैल्यू पर तो बहुत ध्यान देने की जरूरत है, और प्राइस भी साथ में आवश्यक है, क्योंकि ऐसा नहीं कि हम एवरी प्राइस पर कोई चीज हमें वैल्यूएबल लग रही हो, हम किसी भी प्राइस पर उसमें इन्वेस्ट कर दें.
अगर हम एट एनी प्राइस इन्वेस्टमेंट कर देंगे तो फिर हमारा वो इन्वेस्टमेंट बहुत ही वर्दी नहीं रह जाएगा और उसमें हमें जो रिटर्न्स आएंगे वो उस प्रकार के नहीं मिल पाएंगे जो हमारे अपेक्षित हैं। क्योंकि हमने बिल्कुल हाई प्राइस पर कोई चीज बहुत अच्छी लगी मुझको और बिल्कुल हाई प्राइस में मैंने जाके उसमें इन्वेस्ट कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर वहां से मूवमेंट उसका रुक गया और फॉर द टाइम बीइंग वहां पर सैचुरेशन आ गया तो हमें उसमें भी फ्रस्ट्रेशन होने शुरू हो जाती है। जी तो हमें वैल्यू को जी 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 वह जो वैल्यू की वैल्यू बात कर रहे हैं तो वाजपेयी जी वो कहना ये है कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी को देखते हुए मतलब प्राइस ज्यादा। हाँ मैं वही कहना चाह रहा हूँ कि वैल्यूएशन आप जैसे मान लिया न्यू इशू कोई आया नया आईपीओ आ रहा है। अब देखिए आईपीओ ये जो हमारा कैपिटल मार्केट बना था मुख्य रूप से इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बना है। ये जो हम लोग स्पेकुलेशन होने लगा है ट्रेडिंग होने लगी है तो बात की बात है। वरना ये तो ये था कि भाई किसी को एक कंपनी बनानी है उसके बाद पूरा पैसा नहीं है तो उसने शेयर इशू कर दिया और बहुत से लोगों को अपना हिस्सेदार बना लिया। देन कंपनी ग्रो करती है धीरे धीरे क्योंकि कंपनी पहले बनेगी स्टेब्लिश होगी उसमें टाइम लगेगा फिर उसका प्रोडक्ट बनेगा फिर बिकेगा तो एटलीस्ट 3 4 5 ईयर्स लग जाते थे उसमें। और अर्लियर स्टेज में हम लोग जब इंटर किए थे मार्केट में उस समय तो 10 रुपीज पर पब्लिक इशू आया करता था और कंपनी को 2 3 साल बनने में लगते थे। फिर हम लोग उसमें स्टडी कर लेते थे भाई कि ये कंपनी का मैनेजमेंट अच्छा है इसके प्रोडक्ट कैसे हैं। अब टाटा एलेक्सी का आप अनुमान लगाइए कि जिस समय आई थी उस समय कोई बहुत बड़ा इसका वो नहीं था लेकिन मैनेजमेंट की वजह से हर व्यक्ति ने इसमें लगाया। काफी इसमें फ्लक्चुएशन भी देखने को मिले। 400 रुपए का स्टॉक हुआ फिर 150 रुपए आया इवन 10 रुपए 15 रुपए 20 रुपए तक बिका है इसका स्टॉक। लेकिन चूंकि मैनेजमेंट अच्छा था इनका जो है और जो इनका प्रोडक्ट था जो भी इनको बनाना था वो सब चीजें अच्छी थी तो लोग उसमें वैल्यू के रूप में उसको इन्वेस्ट करके कंटिन्यू रखे रहे और जिन लोगों ने उसको इन्वेस्टमेंट के रूप में रखा उनको जबरदस्त प्रॉफिट हो रहा है और जिन लोगों ने ट्रेडिंग के रूप में इस्तेमाल किया उनको थोड़ा प्रॉफिट मिल गया वो निकल गए। तो मेरा ये कहना है कि वैल्यू पर तो हमें ध्यान देना ही है और प्राइस पर भी ध्यान देना दोनों का कॉम्बिनेशन बना करके ही हमें इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचना चाहिए। अब ये न्यू इशू आया किसी ने 2000 का अपना रख दिया प्राइस और हमने जाके उसमें लगा दिया। तो देखिए वो इन्वेस्टमेंट का पर्पज नहीं है। मैं यहाँ पर खुलेआम कह दूंगा कि वो केवल पर्पज ये होता है कि हम लगाते हैं कि साहब हमें 10% मिल जाएगा 20% मिल जाएगा क्योंकि अभी उस कंपनी का पब्लिक में आई नहीं है और उसने इतना रेट बना दिया आपको दे दिया 400 रुपए 500 रुपए खोला आपने प्रॉफिट ले लिया आपको फसल मिल गई। अगर जो नहीं बना तो फिर आप उसको लेके बैठ गए। अब वहां पर उस कंपनी की वैल्यूएशन वो कंपनी ने स्वयं डिसाइड किया। अभी हमारे पास पब्लिक में उसके सारे डाटा भी अवेलेबल नहीं है हमारे पास हिस्ट्री भी नहीं है 10 साल की कि हम उसको ठीक से एनालाइज कर सकें। तो मेरा यह कहना है कि वैल्यूएशन और प्राइस दोनों पर हमें ध्यान देने की जरूरत रहती है जी और वाजपेयी पब्लिक जी बिल्कुल सही कहा आपने वैल्यूएशन का। सो अंकित वैल्यूएशन पे मेरा एक क्वेश्चन है बेसिकली दो क्वेश्चन। एक तो बिल्कुल जो एक लेमैन बोलो या मार्केट में न्यू एंट्रेंट्स हैं तो ऑब्वियसली वैल्यूएशन एकदम से तो नहीं आ जाती काफी ब्रॉड कॉन्सेप्ट है। बट आप उनको क्या सजेस्ट करेंगे कि हाउ दे शुड गो अबाउट वैल्यूइंग बिजनेस और मतलब कैसे ग्रेजुअली वो इस चीज को सीख सकते हैं। सेकेंडली आई ऑल्सो वांट टू नो कि जैसे आईपीओ में जो प्राइस डिसाइड होता है तो हु ऑल आर दी पार्टीज हु डिसाइड कि किस वैल्यूएशन पे वो चीज लिस्ट होगी या लॉन्च होगी। श्योर। हिंदी में बोलूं कि इंग्लिश में? व्हाट वुड बी द बेस्ट हिंदी मीडियम? से तो बढ़िया कुछ है ही नहीं बट अगर किसी को सर आपका अपना मतलब विल है वैसे हिंदी में चलेगा हिंदी वुड बी बेटर। ओके ग्रेट। ठीक है। सो आपका दो क्वेश्चन था, एक तो वैल्यूएशन के ऊपर था और एक सेकंड वाला क्या था? आईपीओ की मतलब कितने। हाँ आईपीओ। तो हाँ मैं आईपीओ वाला छोटा है तो पहले मैं आईपीओ ले लेता हूँ। आईपीओ में बेसिकली आईपीओ में तीन ही पार्टिसिपेंट होते हैं। एक होता है प्रमोटर जिसको अपनी कंपनी का आईपीओ लाने होते हैं। सेकंड होता है इन्वेस्टमेंट बैंकर जो उनको हेल्प करता है आईपीओ लाने में। और थर्ड होता है इन्वेस्टर। इन्वेस्टर में दो तीन तरह के इन्वेस्टर होते हैं। एक इन्वेस्टर होते हैं दूसरे होते हैं, आवाज आ रही है मेरी? हाँ, एक होता है एंकर हाँ इन्वेस्टर, एक होते हैं एंकर इन्वेस्टर, दूसरे होते हैं एचएनआई इन्वेस्टर और तीसरे होते हैं रिटेल कैटेगरी के इन्वेस्टर। तो ये तीन पार्टिसिपेंट हो गए, इन्वेस्टर, प्रोमोटर और इन्वेस्टमेंट बैंकर। रिटेलर या एचएनआई का कहीं कोई रोल नहीं होता है इसमें आईपीओ की प्राइसिंग में।
majority of pricing is decided by promoter and इन्वेस्टमेंट बैंकर। और इन इंडिया एटलीस्ट प्रोमोटर भी मैक्सिमम केसेस में प्रोमोटर को भी आइडिया बहुत कम होता है। इनफैक्ट इन्वेस्टमेंट बैंकर प्रोमोटर को अप्रोच करते हैं और बोलते हैं कि मैं आपकी कंपनी को इतनी वैल्यू में बिकवा दूंगा आपकी कंपनी के शेयर्स, और वहां से बैक कैलकुलेशन स्टार्ट होती है। फिर वो लोग देखते हैं कि हमारी कंपनी की बैलेंस शीट कैसी है, काम कैसा चल रहा है, उसके बेसिस पे वो लोग करते हैं। रिटेल इन्वेस्टर एंड एचएनआई इन्वेस्टर के पास कोई भी रोल नहीं रहता है इसका। they are only price taker, they are not price setter. Ab it is up to you whether you want to invest in that IPO or not. I will never say like वॉरेन बफेट का एक फेमस कोट है कि IPO means it is probably overpriced. I agree with him, but I will never say, I don't believe in saying कि एकदम IPO को देखो ही मत। कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि आपको IPO ऐसा लग रहा हो कि आपने स्टडी की हो, भले ही वो कंपनी लिस्टेड नहीं हो, बट वो कंपनी के बारे में आपको काफी अच्छा आइडिया हो और आपको लगता है कि रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ रही है, तो लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट एक चीज हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि एज एन इन्वेस्टर अगर आप IPO में डाल रहे हो पैसा, तो बेस रेट जिसे कहते हैं हम लोग, या ऑड्स बोलते हैं, या प्रोबेबिलिटी बात करें अपने, वो हमारे अगेंस्ट है इन द लॉन्ग रन। IPO में डाले हुए स्टॉक्स बहुत रेयरली होते हैं जो परफॉर्म करते हैं। इन द सेंस हो सकता है लिस्टिंग के टाइम पे आपको कुछ गेन कभी मिल भी जाए, कभी माहौल ऐसा रहे जैसे 2020 और 21 में हमने देखा बहुत सारी कंपनी के लिस्टिंग के टाइम पे बहुत अच्छे गेन मिले, तो वो अलग बात हो गई। लेकिन उसके अलावा अगर आप इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बहुत रेयर होता है कि IPO के लिए हुए स्टॉक। अब आप एक्सेप्शंस को खोजोगे, जैसे अगर डीमार्ट लिए होते और अभी तक होल्ड करके रखे होते तो एक्सेप्शंस बहुत कम होते हैं और उसमें सर्वाइवरशिप बायस होती है। हम लोग जो चल गया उसी की बात करते हैं, और कितने में पैसे लोगों के फंसे हुए हैं IPO के टाइम से, वो 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 लोग नहीं देख पाते हैं, या लोग उसको हाईलाइट नहीं किया जाता है मार्केट में। ठीक है, नाउ आई विल मूव टू द सेकंड क्वेश्चन विच इज अबाउट वैल्यूएशन। देखिए, मैं एकदम सिंपल भाषा में ये समझाना चाहूंगा कि रिटेल या एनीवन हु हैज, I myself consider myself as a retail investor because I'm not an HNI investor as of now. तो मैं अपने आप को भी, मैं जब रिटेल बोलता हूँ तो मैं ये नहीं कि मैं किसी और को रिटेल बोल रहा हूँ, मैं खुद भी रिटेल इन्वेस्टर हूँ। तो सब मेरे, मैं अपने आप को भी उसी में काउंट करता हूँ। मेरा ये मानना है कि एनीवन हु इज स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग, even after 10 years or 11 years of career in investing, I still admit that I don't think I can value companies efficiently. So why I'll say that? I think वो जो कहावत है कि value lies in the eye, beauty lies in the eye of the beholder. Value also lies in the eyes of the investors, right? इसका मतलब यही है कि आप एक्सेल शीट में कैलकुलेट नहीं कर सकते हो, वो एक एकेडमिक एक्सरसाइज होती है। एक्सेल शीट में आप कभी भी मॉडल नहीं कर सकते हो। मेरा जो खुद का बिजनेस होगा उसमें मैं नहीं बता सकता हूँ आपको कि नेक्स्ट क्वार्टर में मेरे कितने रेवेन्यू होगी, तो मैं किसी और के बिजनेस का कैसे 10 साल का DCF करके आपको बता दूंगा कि क्या होगी। तो हम लोग जो भी करते हैं वो एक अनुमान होता है, एक प्रोबेबिलिटी होती है, और जिसमें हमारे बहुत सारे बायसेस आते हैं। सो अब अगर आपकी क्वेश्चन ये है कि अब मैं अगर नया हूं या मुझे वैल्यूएशन नहीं आता है तो मैं कैसे इन्वेस्ट करूं, मेरा तो यही मानना है कि अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर बनना है और पैसे बनाने हैं, तो मैं अपने खुद के एक्सपीरियंस से ये बोलूंगा, दो दो चीज, दो मंत्र को मैं फॉलो करता हूँ। पहला ये कि मुझे वैल्यूएशन नहीं आता, ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है कि आई विल अंडर, मतलब एग्जाम्पल्स के तौर पे बताऊं तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइशर मोटर्स, बजाज फाइनेंस, ये दोनों कंपनीज मैंने 2013-14 में देखी थी और बहुत अच्छी लग रही थी। बहुत ये था, मैं फुल्ली कन्विंस था इनके बिजनेस मॉडल से, दिख रहा था, बट जस्ट बिकॉज ऑफ हाई वैल्यूएशन आई नेवर बॉट दो शेयर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, एंड दैट इज व्हाई आई रियलाइज्ड एंड आई चेंज्ड माय इन्वेस्टिंग स्टाइल, जहाँ पे मैं अब ये नहीं देखता हूँ कि मैं परफेक्टली वैल्यू करने की कोशिश नहीं करता हूँ। मेरी कोशिश ये होती है, टेक अ लॉन्गर टर्म व्यू इन टर्म्स ऑफ 3 to 5 years। 3 to 5 years से ज्यादा दूर सोचने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि 5 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद क्या होगा, वो किसी को नहीं पता, राइट? तो आप एक 3 साल 5 साल का फिगर फिर भी ठीक है, वो सोच लो आप।
कि कंपनी कैसे परफॉर्म करेगी, और उसके बेसिस में अगर आपको एक बैक ऑफ द एनवेलप के हिसाब से लगता है कि राइट नाउ वैल्यूएशन इज नॉट obscene, keep buying regularly at different intervals, keep buying low, keep buying high also, because you never know. लोग बोलते हैं एवरेज डाउन करो अच्छे होता है, कुछ लोग बोलते हैं एवरेज अप करो, मैं बोलता हूँ दोनों करो। अगर आप लॉन्ग टर्म विजन है आपका, बिजनेस को समझ रहे हो, सबसे बेस्ट लर्निंग होती है जब आप कंपनी को होल्ड करते हो और उसको स्टडी करते हो 3 साल तक, 4 साल तक। तीसरे साल चौथे साल में आपको ज्यादा अच्छे से पता चलता है कि क्या क्या चीज उसकी बिजनेस की इग्नोर करने की बात है, क्योंकि मार्केट में हर समय आपके ऊपर एक जबरदस्त स्पीड से, बुलेट ट्रेन की स्पीड से ना इंफॉर्मेशन फेंका जा रहा है, चाहे वो ट्विटर हो, व्हाट्सएप हो, ये हो। आपका काम यही है कि उसमें से कौन सा काम का चीज है और कौन से काम की चीज नहीं है, और वो एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है। मैं इतने एक्सपीरियंस के बाद भी मैं ये बोलता हूँ कि मुझे भी नहीं समझ में आता है बहुत सारे टाइम पे कि ये नॉइज है कि ये सिग्नल है। इसीलिए अगर आप कंपनी को 3 साल तक, 4 साल तक स्टडी करोगे, एनालाइज करोगे, सोचोगे, अलग अलग लोगों से डिस्कस करोगे, अच्छे नेटवर्क ऑफ फ्रेंड से डिस्कस करोगे, इवन दो वो लोग नहीं इन्वेस्टेड हो, वो लोग नेगेटिव बताए, लेकिन फिर भी सुनो उनकी बात और समझोगे, थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में आपके अंदर जो नॉलेज आएगा उस बिजनेस के ऊपर में, वो कभी भी आप 1 महीने या 2 महीने या 4 महीने की स्टडी में नहीं ला सकते हो। तो लॉन्ग टर्म फ्रेम ऑफ माइंड रखिए, एंड नेवर बाय विद द एंकर प्राइस या एंकर वैल्यूएशन की अभी मैं इतने पे लिया हूं तो बस इससे नीचे आएगा तो और लूंगा, उससे ऊपर भी लेना पड़ेगा, उससे नीचे भी लेना पड़ेगा। कंडीशन एक ही है, आपको उस कंपनी के लॉन्ग टर्म फंडामेंटल पे विश्वास है और आपको उसके मैनेजमेंट पे विश्वास है। ये दो चीज सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप मैनेजमेंट पे बेट कर सकते हो और कंपनी के बिजनेस मॉडल पे बेट कर सकते हो, डोंट पुट ऑल मनी एट वन गो, कीप बाइंग। अगर आपके पास रेगुलर मंथली इनफ्लो है, आप एसआईपी फॉर्म में लो तो वो तो बेस्ट है। जब आप ऐसा करोगे तो देयर इज अ हाई चांस दैट यू विल एटलीस्ट अर्न more than FD returns या double of FD returns. I'm not saying something like 20%, 25% CAGR, but आप आराम से कंपाउंडिंग कर सकते हो मिनिमम रिस्क लेके। एंड आई थिंक जब आप स्टार्ट करते हो इन्वेस्टिंग, दिस इज अ गुड टारगेट टू हैव, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज ऑल अबाउट सर्वाइविंग फर्स्ट एंड देन थ्राइविंग। आप शुरू में ही कुछ उलट पुलट करके अपना सारा कैपिटल खो दोगे तो कैपिटल तो जो जाएगा, आपका कन्विक्शन इतना बुरी तरह से हिल जाएगा कि आप वापस आ नहीं पाओगे। तो Yeah, right. अंकित जी क्वेश्चन पूछूं आपसे? यस यस प्लीज सर। तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ यहाँ पर। सपोज करिए कि मैंने HAL जो है 780,000 रुपए के आसपास खरीदा है, एंड नाउ इट्स गोइंग अप इन अ चैनल, इट हैज थ्रेटन 1600। मैंने सोचा था 1600 2000 जाएगा, उसके ऊपर ही चले गया, मतलब 2000 ऊपर चले गया, स्ट्रगल कर रहा है, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज, बिकॉज नाउ आई, मेरा जो इन्वेस्टमेंट फिलोसफी जो था, मैंने कभी उसके बारे में सोचा नहीं था। मेरा कहने का मतलब है, मैंने म्यूचुअल फंड्स में किया व्हेन आई वाज इन माय जॉब, ठीक है, थ्रू सिप्स, एंड आई शुड डू रैंडम शेयर्स व्हिच आई लाइक, ठीक है, व्हिच वर गुड। HDFC फॉर इंस्टेंस बैंक when I bought, वो 40% का CAGR ग्रोथ था उसका, मतलब अर्निंग्स में 2010। और मैंने उसको बेचा बिकॉज आई सेड यार 40% तक रखेगा, ये मतलब 15% हो जाएगा। तो उस बेसिस पर मैंने उसको बेचा, मतलब इन द सेंस व्हेन आई फाइनली एग्जिटेड एंड केप्ट ऑन ग्रोइंग। सो माय क्वेश्चन टू यू is is that if I take HL as an example, should I only buy or should I also shave off my holdings? Let's say I have 100 rupees invested into HL, और जब 2000 के वहां पर स्ट्रगल कर रहा है, मैंने इसका 30% बेच दिया, एंड देन मे बी आई पुट इन 60 when I buy again at a lower level. What should be the practice? So एक तो आप mindset की बात कर रहे हैं, second is what is the practice which I should do and how do I exit? Because buy and hold का आप जो कह रहे हो, I understand not everyone is Warren Buffett. I don't think we should be Warren Buffett. So what is our exits and how do we know this is also a time, and what, how should we train our mind to say that we should not have regrets? Because FOMO भी तो हो जाता है ना बेचने के बाद। Right, right. Very, very relevant question, and thank you for asking this question, Devashish ji. So, first of all, a caveat: I'm not asking anyone to be like Warren Buffett, and I also believe that
we should not plainly copy any great investor's advice. So those advice are made with a very different set of understanding. We should try to learn from all these investors, but that doesn't mean that we should blindly copy them. Now coming back to your main question, which is कि कैसी फ्रेमवर्क होनी चाहिए और क्या करना चाहिए. So मेरा पहला ये मानना है कि आज ही हमने स्मार्ट सिंह के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया था, which is that there will be stocks which will uh, which will not do anything for 3 years and then become a 5x in the fourth year, and then there will be stocks which will not do anything for a decade. Our job as an investor is to know which one is what, and it is not easy at all, right? So जो आपने एचयूएल का एग्जांपल दिया कि भाई वो एक रेंज में अटका हुआ है, सो आई विल नॉट लुक एट प्राइस रेंज. वहां पे अपना फोकस यही होना चाहिए कि आपको वैल्यूएशन देखना है, और आपको सामने वैल्यूएशन इन द सेंस, मैंने आपको पहले भी बोला है कि वैल्यूएशन मतलब ऐसा नहीं कि क्लियर वैल्यू क्या होगी. आई डोंट नो व्हाट इज द राइट वैल्यू ऑफ अ कंपनी. आई विल टेल यू व्हाट आई कैन सी इज दैट how do I see companies earnings and profit and cash flows 3 to 5 years out. Not because I'm not saying 3 to 5 years because I don't want a longer term horizon. My horizon might be a longer term, but I don't think I have the ability to see anything beyond 3 to 5 years. So I'll restrict myself to 3 to 5 years. And do I see a back of the envelope calculation? So do I see this stock, whatever that stock would be, uh, having that kind of a potential from a valuation perspective to hold? Even if the price is stagnating, I will not mind buying again. But I should also be mindful that I will make mistakes. So that is why I'll not put all the money in that one HUL stock. Mind you, when you have a portfolio of say 10, 15, 20, 25, whatever be the number you are comfortable with, I'm not giving you any number. Once you have a portfolio of 15, 20, 50, 25 stocks, it is just like, I'll give you an analogy of Dennis Lely, who was I think Debashish sir, you would have known about him if you are a cricket fan. So he used to say that I will hold the ball in the right way, and I'll always try to pitch it on the off stump line, and I don't know which way the ball will swing. If I don't know, how can the batsman know? That was his style. And I believe as investors also, we should understand that we have no control over company's performance. Even if you have 20 stocks in your portfolio, your best stock may underperform. Your worst stock in the sense ranking, in terms of your ranking, obviously you like all your 20 stocks, but if you rank them, and if the stock which is probably ranked 20 in your ranking, it has the potential to be the best stock. You have no control over that, and that is why you should always try to be, that is my, I'm not saying you should all follow this is how I do it. I try to look at it in this way because I have already faced that in my career, where I was more bullish on one company and it turned out to be a very average performer, and the other company which I thought that is an average company, it turned out to be a 20 bagger. So that is what I have learned, that I will not know in advance which company is going to be a 3 bagger or 5 bagger, rather than speculating and allocating say 15%, 20% of my portfolio in one stock. I believe in spreading my investments equally over the stocks which I'm bullish on. And that is what we recommend to our clients also. So my interests are completely aligned with my clients. I hope I could answer your question, Devashish. Yeah, thanks, Ankit. Thank you. So, yeah. So, welcome, Dr. Velumani and Meet Shah. So, first we go to Meet Shah. Meet Shah, we are discussing which, value or price which should find more value to an investor, and also would like to know your view how you go about valuation. And after Meet, we will come to Velumani sir. Uh, Thanks, Prince. I guess Ankit Bhai has almost covered everything. Nothing left for me to cover. But as far as my investing style concerned, uh, I'm a bit micro cap kind of guy. So I hunt for special situations like Joel Greenblatt has taught us. I hunt for spin-offs and takeovers. So
in the company which I invest, my pure focus is on management, and management. If the management is delivering, then I don't care what how much debt the company has or what are the ROEs and what are the ROCs. So for management, if the management is on right track, if the management is doing everything good, like suppose if I say I have invested in a company called Safari Industries, okay, so a guy from VIP came into Safari, bought the company which is on the verge of bankruptcy. At that time, Sudhir Jatia was around 40, 42 years of age. So you need to focus that a 42 year guy who is investing his net worth, 70 to 80% of his net worth in one company, okay, and that to say a same line of acquisition, okay, and so you need to focus on such a kind of management that he is having proven track record, 15, 20 years of track record and 15, 20 years of runway, and the same line of acquisition, 40 years guy. I mean, he's aggressive and mature as well. So I focus on this kind of things that if an intelligent person or a very dynamic person enters into a bankrupt company and he turn around that company, so then I calculate what kind of earnings he's going to build up in that company. What will be the PAT and free cash flows for next 3 to 5 years, and then add back everything to the current price, and then you will see, yeah, if you give a certain 30 35 multiple, then this company will trade at certain market cap. So I go this way. So it's totally different approach, but yeah, what Ankit Bhai has covered, I think it works well for SIP investors and the investors who are purely focused on blue chip. So I think his approach is also right, and I think Joel Greenblatt approach is also right. It depends upon individual and the situation that what approach we select. But as far as price or value is concerned, I purely select value, and I purely select management. For me, it's all about management, and management. If I'm investing in India, then I will purely focus on management, business, and then business, businessman, and then business. If I'm investing in abroad, then I will focus on business and then businessman. So it's purely opposite. Yeah, that's my style. Yeah, thanks, Meet. Thanks for adding value. So, Dr. Velumani sir, I'll come to you. You being the promoter of Thyrocare in the past, so how your experience was like? We were discussing with Ankit that it is difficult even for the promoter to guess how the company will do in coming times. So, what would be your view on this? And apart from that, would also like to know your view how to gauge value of a business. Thank you, Prince. And I looked at the title. It is value or price. If you look at my name, it is value money. So value or money should have been easier for me to tell. Having said that, I was in the other side of the table till last year. That is an entrepreneur and a promoter. I am in this side of the table now as an investor. For a promoter or the entrepreneur, it is always value, because value is nothing but number of shares multiplied by the price. So when he talks about value, his eyes are also on price. But since he holds it, he runs it, he will have a happiness. My company is worth this much. That's purely value. Whereas an investor doesn't own the company. He only owns that piece of the company, that many number of shares. And for him, the price decides till he holds what is the total wealth he has in his hand. So, but I must tell you here, price as a numerical has no much value. The investor is looking always for a delta. Delta is x2 minus x1. X1 is my acquisition cost. X2 is my selling cost. He wants X1 Alara and X2 Ahara.
This is in the radiation field, these terms are there. Alara means as low as reasonably achievable. That is what he wants a purchase price. Ahara is as high as reasonably achievable. That is what his selling price is. And the difference is what an investor is interested or even a trader is interested. So if you ask me, don't look for price only. Prices are very often very difficult to assess. It's very difficult to assess why one business which is having a 5,000 crore turnover does not have a 5,000 crore market cap. Another business which does not even have 500 crore has 1,000 market. So it's not the top line alone. It's not the EBITDA alone. It is not the profit alone. It is not the growth, last 2-3 years growth alone, 2-3 quarters growth alone. And it is not the integrity of the promoter alone. And it is not the capability of the promoter alone if he has got into a wrong kind of strategy and got stuck. So a lot of things are there. अगर ये इतना आसानी से कोई कह सकता है वो ये दुनिया में सबसे धनवान रहेगा. It is very very important that everybody tells his own bhajan, the bhajan in which he believes is working for him, and the bhajan he believes did not work for him, and then he says this is what I do as my thesis. Like somewhere I heard it is suno sabki karo apni. You must listen to people and understand what do they call as value, what do they assess as the true share price. Let all said and done, entire diagnostic field exactly a year back was double than what it is today. In 12 months period, they all have become half. So it is not that simple. When Thyrocare was transaction took place, it took place at 1300. Then people started buying at 1400, even 1450. Now no one probably would have ever known it would go to as low as 620. Not just Thyrocare, entire diagnostic stocks. Oh, some of the stocks, even bank stocks, have gone like anything. So it is not that simple. I don't think anybody can tell I know everything. Having said that, spread the risk in multiple industries because every industry has some rallying periods. Hold on for a longer period. Sometimes you buy a stock for 1.5 rupee, it is sold at 6 rupees within a matter of even 6 months. So it is not the absolute price of the share. It is not the value of the market of the or the share price calculated, deduced based upon top line, mid line, bottom line growth and industry and all those things. ये तो हाई रिस्क गेम है. Should not into that, and if somebody is into it, they should not keep all eggs in one basket. Take a calculated risk. This is what I can tell in general, but if there is any one or two questions, I will be happy to answer. Yeah, thank you, sir. So Ankit have one question. He'll ask, and then Samarth go next. Ravi will come to you after they complete. Yeah, Ankit, over to you. First of all, thank you so much, Velumani Sir. It is always great to listen to you. And uh, that's why I love Twitter. I'm already feeling goosebump talking to you. So I don't know whether you remember or not. I was the one, I'm Ankit Kanodia from SmartSync Services. I was the one who shared with you Vikas Kasturi's uh, article on yourself. Yeah, I In, remember now. yeah. So I just have one question for you Yeah. because, in fact, it's not a question. I have seen all your interviews. I think many of the listeners who have joined today, they might not be aware about your story in terms of how you got listed.
So that's a very interesting story where private equity guys came to you twice, and on the third time you said yes. And what interaction you had with your No, brother? with all said and done, थोड़ा तड़का मार के थोड़ा नमक चढ़ा के नींबू चढ़ा के ये मेरा स्टोरी होता है, but the basic fact remains, it was very interesting one. Yeah, so it would be great to hear again from you, sir, because many of the listeners would not be aware of of that story. And also, if you can share your experience after getting listed as to what was there in your mind in terms of thinking from the from minority shareholder and how you thought about it, that would be really great inspiration for all of us. Thank you. Over to you. Actually, it's a little longer story, but let me start from just 17 years of Thyrocare. Thyrocare has never borrowed, zero debt company, never diluted, and never went out pitching to anyone. And the punch which I have got is, if you go and pitch, it is your value is half. But if the investor comes and pitches about himself, the value is double. So I was the guy who had courage to release full page advertisement for my Arogyam profile. And I expected more turnover to come, but actually more investors only came. In fact, this is a hint for entrepreneurs. If you want investors to come, don't go and pitch. Give an advertisement for your product. Investors should be on your door. But I didn't want to sell the stock, because what will I do when a company doesn't need any cash, and the cash rich company? Always I had 100 crore in the fixed deposit with my banker. When you don't want to sell, you have courage and you get more value. That is what I was telling in that story, that the first time the investor came in, and I did not know the value. Just now, our topic is value or price. Let me be very honest with you. No promoter knows his own company's value. No promoter knows his own child's value. No one knows what is the true value. All the values are demand and supply. So when the investors came to my door, I felt the company may be worth 200 crore. If I tell 400, they would go away. And my interest was to see them going away. So I had a courage to tell 400 crore. They asked a question, how come 400? I just said, because you are on my table, it is 400. That was a very, very rude statement, but then that's the truth. So they went away. But then they were in love with the script. So when a girl is in love with you, you are more comfortable. So is the investor. And they came exactly after 2 quarters, and felt that my 400 was right. Otherwise, why, how they would come back? So I had the courage to tell this time 500. They were quite shocked. 400 quarterback and 500 now. That is too much of an appreciation. But then I don't want to sell. The thing is, you don't want to sell. So they felt that I am arrogant, and they went away. The same party comes the third time, and then this time I did not even waste time. I told, if it is 600, we sit and discuss. I told to the man who was to bring only. Otherwise, there is no need for coming. They still came, and then we'd finished the deal at 600 crore. At 25% of it was a secondary deal, not a primary deal. Money has not come to the company, it has come to my pocket. Then within another 12 months period, one more party comes, and this party, I thought I should 800. Then I thought, if they agree for 800, it will be very difficult to refuse. मन चाहता था 1000 बोलो, मुंह से निकला 1200. And they said checkbook लाए हैं. So I did a deal at 1200 crores valuation. Yeah, 10%. So 35% is in the market. 5 year goes. The party wanted to go out. I could have told them to find another private equity and exit. But I felt I should listen to them, and they wanted wanted me to do an IPO, and I agreed to do the IPO. And then the IPO, when we did the roadshow for the anchor investors, all were ready to
give a 2400. Now, my interest was I shouldn't take 2400 because it may not be truly getting even fully subscribed. बेइज्जती होएगा, ये लोग तो बाहर जाने वाला है, हम तो रहने वाला है, हम जवाब देना है आने वाला इन्वेस्टर्स को. So I was keen to do at only 2000. So there was a huge emotional pressure and lot of ups and downs, and finally I agreed to do a 2400 because I was told if we go for even 2400, it will be at least 10 times subscribed. तो चलो देखेगा, मजा तो आनी चाहिए. I went ahead and the issue got subscribed 74 times, and that was a great experience. I felt I have overpriced, but it got oversubscribed. And the day when the stock was listed, it was at 3300. So मैं सोच रहा था 3 महीना पहले कंपनी का वर्थ 2000 करोड़ रहेगा, और 3 महीने के बाद ये तो 3300 में लिस्ट हुआ है. So that was the Dhamaka listing, but I am very sad to see today the market, the company is just 3300. क्यों 3300 गया मुझे नहीं पता. बीच में कभी 600 गया था, फिर से 400 आया, सॉरी बीच में कभी कितना 4000 करोड़ गया, 4.5 तक गया, वापस 4000 में आया, उतार चढ़ा होके पहले बाद में फाइनली व्हेन आई मेड ए डील इट वेंट अप टू $1 billion. टुडे इट इज बैक टू $500 million. प्रमोटर क्या करेगा बोलो. प्रमोटर हैज इंटेग्रिटी, ऑनेस्टी, हार्ड वर्क, सब कुछ जगह पर है. तो मार्केट के उतार चढ़ाव के लिए इन्वेस्टर ही कारण है. किसी को कभी कहीं किसी स्क्रिप्ट के ऊपर खुजली आ जाता है तो चढ़ा लेता है. पता नहीं है कैसा लोग मॉनिटर करता है, कुछ तो चढ़ता है तो वो लोग पता लगा लेते हैं कौन खरीदता है. अगर वो खरीदता है तो वो इंटेलिजेंट है, वो खरीदता है तो मैं भी खरीदूंगा. वो तो टाइम पे एग्जिट हो जाता है, बाकी लोग फंस जाते हैं. So this is the story, gentlemen. Thank you for asking me to tell the story. It was something which happened to me as a promoter. It was pain and pleasure to see every other day. कभी फ्लाइट में बैठता हूँ, जब फ्लाइट में 2 घंटे के बाद उतरता हूँ तो 30 करोड़ चले जाते हैं. कभी जस्ट एक हफ्ता ब्रेक लेकर रिलैक्स करता हूँ, 1000 करोड़ एक्स्ट्रा हो जाता है. इतना मेहनत कभी कर लेता हूँ, उस हफ्ता में कुछ 50-100 करोड़ कम हो जाता है. इस स्टॉक हैज nothing really to do with the short term outcome of the promoters hard work or the business. In the long run, it is the industry which drives it. In the long run, it is the company which drives it. And it has to be always profits multiple. Any price has to be profits multiplied by the industry multiples. इतना ही मैं कहूँगा. मैं कभी शेयर मार्केट के बारे में कुछ ज्यादा पढ़ाई भी नहीं किया, ध्यान भी नहीं दिया. साइंटिस्ट था, कुछ नहीं था. When I came into business, I did not know what is company, what is resolution, what is dividend, what is shareholders, I mean obligation to shareholders, responsibility of investors, sorry promoters, कुछ भी पता नहीं था. MS रामैया का कंपनी ला बुक बाद में खरीदा था कंपनी चालू करने का बाद. Thank you, gentlemen. If you have any specific questions, I'll answer. Thank you so much, sir, for your answer. That was a very inspirational journey. Thank you so much for taking this question. Thank you, sir. So, Samarth, anything on your part, or shall we move on to Samarth? Yeah, Ravi, you can come in the meantime, Samarth. Come.
Thank you so much, Prince Ji and Samarth, for hosting this space. Dr. Velumani, it's indeed a pleasure to hear your insights and directly speak with you here. I think I still remember the IPO of Thyrocare during college days, and my father would feel happy to see this, that I'm talking to you here. So I think I'll try to be very quick. So absolutely admire the journey, the humble personality, and how you have built and exited a profitable business around, which is clearly an inspiration for thousands of other budding entrepreneurs and torchbearer of sustainability. I finished my engineering, left a government job in a very short time, and went to UAE when I was not even 20-year-old. Currently leading the chair of one of the leading edtech into government exam preparation space. It's been 9 years since Textbook has been helping other aspirants. I have two questions for you. Uh, on the topic value and price, not just into the stock market, but how does someone optimize something between value and price when it comes to joining a startup? We have a buzzword like ESOPs and equity, but you have seen both of the side as an entrepreneur, or as an employer too. So what do you have to say for young talents looking forward to join companies? That is A. B, your current outlook on the current Indian startup ecosystem, and also in case if you feel like sharing that, how was it like to sell the company you have worked so hard to build? I read your threads, that was kind of heartfelt, but would love to share your insights on both of these topics, sir. Thank you so much. Thank you, thank you. I think I belong to your father's age. That means हमारा जमाना में जब भी बिजनेस चालू हुआ था, हमें कोई स्टार्टअप नहीं बोलता था, हम अपने आप को एंटरप्रेन्योर नहीं बोलता था, और ये तो फाउंडर को फाउंडर ये सब शब्द उस समय नहीं था, हिसाब करके कुछ सुना ही नहीं था. So when I say all these things, it is today's environment where the promoter thinks I should give ESOP, otherwise I can't retain. But the promoters think they should give ESOP only to the big brains, not to every employee, which is sometimes not a good thing to do. Also, today's employees, when they join, they don't see salary alone as their entitlement. They also see why not ESOP. So ESOP एक्सपेक्ट करके डिसअपॉइंट होने वाला बहुत लोग होते हैं. हिसाब देता है करके बोलता है, लेकिन उस हिसाब को कुछ मतलब ही नहीं होता है, क्योंकि कंपनी का वैल्यूएशन होएगा तो ये हिसाब का मतलब होता है. सो दोनों की तरफ निराश बहुत लोग होते हैं. मैं ऐसा ये कंपनी चलाया जिसमें मेरा आईपीओ आया था after 21 years of running the company. Or when I understood my company market cap is 2400 crore, which was what my outgoing investor was calculating. I asked my general manager, what is that salary all employees who are working in our company have received from the day one? So it was a little difficult. Somebody has worked 20 years, somebody has worked only 2 years. So he came back and told me, sir, it all happens to be around 23 crores. When 1% of the ESOP is 24 crores, I declared an ESOP for all my employees, that 1%, which means all employees got a equivalent of what salary they have received from the day one till the day the IPO happened. This includes the drivers, peons, and everyone. Why I say this is, मैंने कभी बोला नहीं था हिसाब दूंगा, तो जब भी मैं दिया मैं तो हीरो बना. So I want the both sides, the entrepreneur side, not to promise too much. Be good, be nice, be truthful. Being truthful is more important than even just giving promising ESOP. And then when you get to have a fortune, you can always share that much you feel is justified. So that is about today's generation's expectations, and as well as today's entrepreneurs sometimes over promise. I don't know whether I have answered to all your questions or not. If there is any part not answered, please repeat that part.
It indeed does, sir. Thank you so much for sharing your views, but also would love to listen the exit part, because after running the company for 30-40 years, then taking an exit, I mean, how difficult that decision was, and it would be indeed helpful for us. I think the day I did the deal, June 25th evening, ET now, I gave a interview with Nikunj Dalmia, was very emotional, in which I have said almost everything. But that now you are asking, let me tell you, an ability to detach is the power of your joy. If you can't detach, you can't enjoy. Yeah, it is almost like, your daughter is 24, 25, and she is getting married. And that is something which you cannot stop it, but it has to happen, and you are happy that she is married, and you are sad that she will not be living with you. So is it? I was a 63-year-old man. My mean age of my employees was only 25. I want all of you who are here to understand one more criteria. If you want truly to value the company, find out the mean age of the employees. I had 1500 employees with a mean age of 25. Company is 27-year-old gentleman. Mean age of employee is 25. Very, very unique. 95% unmarried. And that particular crowd is not a crowd which I could truly manage, because I am an old man. So when I got an opportunity to have a new, young, energetic, highly qualified, highly aggressive, well-funded startup who came to pick up the company, I felt this is an ideal boy for my daughter. That's simple. And for me to be very honest with you, I think you have touched a very emotional now. I lost my wife just 50 days before IPO for a pancreatic cancer. So for me, only the journey was only till IPO I enjoyed. After IPO, I did not enjoy the journey. Because I did not enjoy the journey, company did not grow as well as it should have grown. Somebody was telling it is all the promoter, their integrity, their hard work. Let me tell you, ऐसा कुछ stress आ ही जाता है तो promoter को focus कर ही नहीं पाएगा. So things were not working all right, and I felt one day if somebody comes, I should hand over this company, because I don't have that support which my wife was giving all those years. So I think it was more in the interest of my children also. My children also felt. I want all of you to listen one more very interesting point here. I lifted an adult buffalo by starting to lift a buffalo calf from the day one. That is startup. So in business, when you start up, you don't have work. You get some work, then you get more work, then you get a lot of work, then you get that much of work. You yourself find it very tiresome to work on. Now the children are now only 25 or 28. Now, if you hand over this business in their hand, it won't be easy for them to run. That is like asking them to lift an adult buffalo on the day one. So we have been discussing for the last 2-3 years. My children were telling, Dad, we are with you till you run. That's a very clear indication that they want to help me to run, and that they don't have much interest to run it. And my children also told me, there was somewhere it was written, if you love your children, give them money, not the company. So I was more or less convinced, if there is a party comes, and if that party offers me a value which I am demanding, and I very honest with you, I demanded a CMP plus 20%, current market price plus 20%, and that was agreed. And it was not at all very difficult to say yes for such a deal. But yes, it is 27 years of a lot of emotional hard work. The day when the deal was through, evening 4 o'clock we signed.
and it was a Friday, and we didn't want the market time in the market time to announce it. So by evening 5 o'clock, I found that day the day I signed the MOU, the share price touched $1 billion market cap. So I wrote to my all my managers, assemble. We will let us celebrate our $1 billion mark milestone. So all of them came to the floor. It was a COVID time, so we had a huge floor on which we were standing, 50 of us, and I congratulated all of them. And then that was the first news. And the second news, I said, we have signed. I have signed, and I have sold the entire stock to the new, promising, dazzling, dynamic, aggressive young new promoters. And I was trying to tell them what is the rationale behind it, but then I couldn't make the speech complete. I had broken out, and then literally in the floor everybody cried. To that extent it was a very emotional one. But having said that, nothing stops. Today, after 1 year, I'm interacting with them, and half of them are very happy, and half of them, of course, whenever a government changes, whenever the chief minister changes, the mantralaya, half of the staff will be unhappy, half of the staff will be very happy. So is in any organization. So this is about the exit, Ravi. I thought, once you have asked, I must put emotions and communicate that. Thank you. Thank you, sir. So Vishal and Reni, you two go next. Yeah, Vishal, you go first. Yeah, thanks, Prince. Good evening, sir. Sir, Good evening. it's always good to hear from you. And just wanted to understand, you sometime back mentioned that the moment you went public, it was a little difficult for you to run the company. So, my question is, how difficult it becomes to convince the once the investors are on board, and all of a sudden you have to take their approvals, you have to convince them. How difficult or how easy it is for a promoter to convince them investors to take decisions, or how difficult it is, and how is the journey like on that side, sir? No, you are little confused. I had 65% stock in my hand, and none of the decisions I needed approval from the investors. If you look from the procedural point of view, and the investors have their own expectations. They want by end of every quarter to deliver more than what they expect. So there wasn't any stress for me because of any specific investor wanted me to do that I didn't do, or I wanted to do that and investor didn't permit me to do. Having said that, before IPO, when you are the promoter and you don't truly have to worry about, even before the arrival of private equity, there were no discussions, all were decisions. I have a punchline which very often I tell: in life, either you can discuss or you can decide, you can't do both. And before the arrival of investors, it was all decisions, there were no discussions. After the arrival of the investors, it was a lot of discussions and some decisions. After my IPO, it was only discussions, there were no decisions. To be very honest with you, when the entire money is yours, you are a risk monger, you can take risk. But the investors are not risk mongers. Investors, oh, let me tell you, define what is today. I am also an investor. Don't feel bad, but let me define the investors. There are only two things possible in life: one is security, another is prosperity. Investors want secured prosperity, which is not existing. Risk nahi liya
तो रिटर्न्स तो कम ही आएगा, ज्यादा रिस्क लेगा तो ये ज्यादा आएगा. When the independent directors tell me don't put the excess cash into even mutual fund equity, put in mutual fund debt, because it is not your money, it is the investors money. मर गया ना. So independent directors will defend for the small investors interests, they won't allow you to do that risk. But having said that, it is not because of investor pressures the company was not doing very well. Company was doing fairly around 16-17% CAGR post IPO 5 years. But having said that, I am not used to 16-17% CAGR. I am used to 25 plus. That's why I said post IPO बोर लगता था, ऐसा लगता था कुछ काम सचमुच नहीं हो रहा है. But post IPO, investors every call will ask, why you are not doing like LOL, why you are not doing like Metropolis. अरे पड़ोसी का बीवी के बारे में बताए कि तोरी ये पति अपना अपना रीत बदलेगा, नहीं बदलेगा. The life is compare, no comparison. No investor ever had understood I was in a B2B business and mine was a different business model. So it is not easy for investors to get into all intricacies of what is chronic illness, what is acute illness, what is lifelong illness, what is the illness which comes and goes away, which illness needs an MD pathologist, which illness which technology needs just a technician. ये सब पता नहीं है. Having said that, there are good number of intelligent investors who very meticulously invest time, seek appointments, will come and meet our CFO as well as general managers, will ask my time only for half an hour, and in half an hour they will ask 4 such good questions. I will become more intelligent because they ask questions. There are good number of investors. So this is my inputs, Vishal. I hope I have answered. Thank you, sir. Thank you so much, sir. All. Yeah, Yogesh sir, you were raising hand. No, with Velumani sir's permission, if I can also layer on to Vishal's question. So, Vishal, first and foremost, in Thyrocare fact pattern, the company was in control of Velumani sir. So, your question is not applicable in that fact pattern. Your question is applicable, yes, if, for example, there is a partial sale out and the promoter continues in the company and say investor comes into the company, and it is only then where you perhaps require their approval, Absolutely. etc. Absolutely and correct. all. Yeah. Yep. So so I just thought I'll clarify that. Thank you so much. No, I will add something more here. I want you people to understand what happens in boardrooms. Pre-IPO, uh, 1 year before IPO, the company's growth wasn't that good. And I knew it is because a lot of new competition has come in. Everybody is copying the business. I am living in a comfort zone of 40% EBITDA. And if I want to grow, I need to sacrifice EBITDA. So I said in the board meeting, I want to reduce the price by 10%. Now that has irritated the investors. And whenever I have a board meeting, it is never a board meeting, it is like a general body meeting. Anybody they will bring, I have no problem. Because I know what I'm talking, and by coming in huge numbers, they can't influence my decision. So when I said rate has to be reduced by 10%, one representative of the investor was a bit annoyed. No, you can't do it without asking us. I found the argument very valid.
So I just got up from my chair, went and stood behind his chair, and I told, Mr. X, go and sit in my chair. You have already invested money. From today onwards, you are the chairman and managing director of the company. Run it. Without reducing the price, if you can have the growth which you desire, I will give you 10 more percent equity. The entire room, all were quite shocked because I want him to run it. I want him to be rewarded for getting that growth without diluting that EBITDA. He said, no, that I don't think I can do. If you think you can't do, you must allow me to do. Either lead me or follow me. Don't confuse me. Trust me, the IPO got 75 times subscribed. And in Hong Kong airport, I met them. I asked them, what was that argument on that day in the boardroom? No, doc. What do we know about the industry? You were a visionary. Have you understood what I'm talking? If you can drive it, if you can take risk, you don't have to ask anybody's approval. Take decisions. Move ahead. In fact, there is a punchline. There is nothing known as a right decision. Make a decision, take a decision, and make it right. Thank you, sir. Right. I am known for punchlines, so I will add a few of them whenever I am asked a question. Thank you. Yes, sir. Great to hear your punchlines and the humor involved. Yeah. So, Rennie, thanks for being patient for so long, and you can come in and ask your question, please. Prince, thank you for that. That is the only great thing that I have with me. That is patience. Same in the market also. Rennie, you there? My question was initially. Yeah, I am there. Are you listening? Hello. No, Rennie, You're audible. Rennie, go ahead. Yeah. My question initially was for Ankit, but now I will divert it to Samarth. Rennie, can you hear us? We cannot hear you. Yeah, I am hearing you. Hello. Anyway, let's move. The mic is on. So, Meet, Ravi, or Vishal, any other questions you guys have from? No. Prince, I can hear any. Prince, Rennie is audible. Am I audible? You're audible, Rennie. Please go ahead. Yeah. Okay. Now, before the question was for Ankit, but I will divert it to Samarth. The question, I will link it to the football game that I have been playing with 35 years. And some of the kids that asked me, sir, what would you rate first? Player who is speedy in the game, means a nice runner, or who has a great stamina, or who is great at dribbling. And I said them, I would not rate all these players top. I will rate the player who is at the right place at the right time to receive the ball, because then only it is possible to hit a goal. So, as a retail investor, I have found a lot of the investors are not there at the right place at the right time to invest. Somewhere I think so, the period they don't analyze, they don't study that much. As Ankit had said, the DCF, somewhere we have been mixed up in these Excel sheets, but we don't anticipate the macro structure of investments. We somewhere are in the cocoon. We don't look at the broader picture whenever we are investing. When we are looking, we are always following the narratives, and the narratives are given to us. We don't create our own narrative. As we said, okay, we are not at the right place or right time. So how a retail investor can develop this tool so that he can be at the right place at the right time to invest? Because most of them are always following the narratives. I have seen that. This is my question. Hello. Probably Prince Ji or Samarth can take this in case if they want. Yeah, Yogesh sir, I couldn't hear Rennie, so I'm not sure what did he ask. So anyone can. Yeah, Yogesh. Yeah, so Prince, you need to rejoin. I think there is a glitch.
So, yes, Reni, if I can take that first, then others can add on. So, you are right. They are retail investors because they can't do what you have described already. And therefore, they are retail investors, right? At the end of the day, they are therefore not sophisticated investors. Having said which, yes, nothing prevents any retail investor to up their game and come up to speed by doing relevant research, etc., required. If you see just now on this space, we are 200 plus individuals here listening to this conversation. I can tell you hand on heart, not even 10% of us present on this space would be even reading a IPO offer document. Forget about other things in life. This is the reality. And you take it from me. I am a lawyer in capital markets. I now do public M&A. I used to do IPOs as well. We spend day and night drafting offer documents which run into 500, 600 pages. People give a damn. Retail investors, the document is prepared for retail investors, but nobody wants to read. Therefore, you are right. And take it from me, we are in 2022. In 2030 also, we will be having this same conversation. Retail investors typically will only piggyback. That is the reality of life. If promoters sell, retail investors sell. If promoters buy, retail investors buy. So they piggyback. This is just an example I am giving. और if some ultra HNI investor will buy, they will say अरे उसने buy किया तो हमको भी buy करना है. So I think that is the tragedy of Indian capital markets, and ultimately, therefore, Reni, it boils down to financial literacy, education of investors. But I think the people around me, at least I see, people don't have patience, or rather, in Hindi, as we say, ना कंटाल आता है. अरे यार कौन पढ़ेगा ये document? What nonsense is this? Why will I read this document? So people invest for the first day IPO listing gains and all those issues. I don't want to be repetitive. We all know what's happening around, but believe me, nothing prevents this retail investor to be smart if they wish to. Over to others. Thank you so much. I have nothing further to add. Prince ji, if I may. Yeah, Ravi, please. And also would request in case if you can invite Gaurav Shishimal from Kagas. I think he would not also want to add something, but he may have asked. But Dr. Velumani, circling back to the previous entrepreneurship topic, and I think the third part of the question, what is your current view? I mean, we have seen the bull run in the stock market, in the Indian startups, everyone is raising money, but now people are calling this funding winter. What are your thoughts around the current ecosystem and also around profitability and sustainability? How do you see it, sir? Yeah, actually, the football analysis is a little difficult to, correlate with the stock market, because football is very clearly seen the entire ground, very clearly seen where the goalpost is, very clearly seen where the players are, and also in the last few seconds people can see where players are moving. Whereas the stock market is such a big ocean, so many industries, so many blind spots, so many miscommunications, so many false narratives, so many people for a kind of rewards recommend without any rational. So a lot of things are happening. So I won't truly say that these two are comparable. And I also agree with Yogesh. It is too complicated and too difficult for all retail investors to read that 850 pages of what is DRHP. नहीं होता है, प्रोमोटर ही नहीं पढ़ता है तो इन्वेस्टर क्या पढ़ेगा? सचमुच वो एक बड़ा चैलेंज है. Having said that, coming back to Ravi's question, अभी फिलहाल क्या हाल है? Now, always the stock market used to have one reason or one and a half reason for the kind of
Mandi are the going back and then distress and 10% down, 5% down, 7% down. This always used to be one reason, and that one reason gets corrected, and then it takes sometimes 3 months, sometimes 6 months, and then it is back to track. This is how I see for the last 20 years the stock market behavior is. But whatever has happened in these last 2 years is a bit of very difficult to comprehend because of the pandemic which had come. What kind of industries, what kind of short term, long term analysis it has done, which country has what kind of GDP challenge, inflation challenges, what uh, its interest reversals, all those things appear to be truly complicated further by the Ukraine war. So Ukraine war हो ही रहा है, बंद ही नहीं हो रहा है, वो कहाँ रुकेगा वो भी किसी को नहीं पता. और यूक्रेन वार को लेकर उसके कारण एनर्जी fuels, a lot of things in between. Some countries are collapsing, some countries collapsing where the president himself runs away and then sends an email resignation. And you have countries which have even US with the highest inflation, GDP lowest. So why I am telling all these things is only to tell ना मुझे कुछ पता, ना मैं आपको बताऊंगा ये होने वाला है. Only thing is जो नीचे जाता है वो जरूर ऊपर आएगा, लेकिन उसके लिए 3 महीना लगेगा या 3 साल लगेगा ये नहीं कह सकता है. हम सब sitting silently and witnessing every day for the last 100 days. When the stock price when the stock price moves up, it moves up to give for my portfolio something like 3 crores on a day, and when it goes down it goes 6 crores on a day. बस एक कदम आगे 2 कदम पीछे, एक कदम आगे 2 कदम पीछे, खत्म हो गया. कौन पंडित है, कौन कह सकता है we have reached the bottom? It's very difficult to tell. Don't get disappointed that I didn't answer. Don't get disappointed that there is no end to the agony. But in the typical language which we all are used to, अच्छे दिन आने वाला. Thank you. Thank you, sir. Dr. Velumani, can I ask So you a we have question? Vishal Yeah. Shah and Srinivas. So one by one, you guys can ask your question. Prince, can I ask a short question to Dr. Velumani? You can go ahead. I have no problem. Vishal Shah, Dr. you go Velumani. first. Okay, sure. No, Prince, somebody else is asking. Yeah, good evening. Okay, go ahead. Since our topic is for value or price, we have seen a good, meaningful correction in Indian IT sector. It's like fallen from 41,000 to now 26,500 odd levels. So do you think there is a value in this, or you think there is more price correction to this? Anybody from the panel can answer. Yeah, it's very difficult for me to answer because I think no one knows which is the bottom. This is the true situation. But having said that, if somebody has money, please keep buying every week for 10%. That is my input. Yeah, Vishal rightly said, staggered way of buying is always appreciated. The reason being, whatever the market or the broader market is doing, be it going higher or showing some correction, so the cost averaging places you better. So that is the best way. Identify good businesses and invest a portion of your money in a staggered manner. Yeah, Srinivas. Yeah, Yogesh sir, you can come in. No, I mean, to Vishal's question,
See, honestly, I don't predict. I agree with Dr. Velumani. Continuously keep investing. So it all depends on what one has conviction about it. But let me tell you 2 3 points. Today I was looking at some TV channel. There are two analysts saying IT has bottomed out. There are two saying it will go even further down. So there is no clear cut answer to this question, or rather, such questions cannot be answered. Only in hindsight we will know which fool is an expert. Always, always. Only in hindsight a fool will be an expert. Remember this. And on a lighter note, Vishal, don't take me otherwise. Your profile says you are a dreamer. Perhaps I don't know whether you have dreamt about it or not. You can tell us better. What do you think? Thank you. Thanks, Can I ask a Yogesh. question to Dr. Velumani? Srinivas, you unmute and ask your question, please. Prince, I think he left. Reni wanted to ask a question. Yeah, Rani. Yeah, my question is to Dr. Velumani, sir. Dr. Velumani, don't you think a macro environment like COVID, which came, it aided in the price and the value that was paid by the buyer for Thyrocare? Yeah, in that way, COVID was a very big threat in 2020 March. पूरा बंद करके बालकनी में बैठ के घंटी बजाया. तभी किसी को भी नहीं पता था अगला साल हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेगा या नहीं करेगा. The first wave gave some kind of reprieve and then the second wave came. वो ऑक्सीजन नहीं है करके फरवरी सेकंड वीक या थर्ड वीक में लगभग पूरा देश स्टैंड स्टिल हो गया. तभी RT-PCR का टेस्ट पीक में चल रही है. मेरा रोज 40,000 RT-PCR में बहुत जल्दी स्केल अप कर दिया था. So what happened is the entire world was panicked. And it looked like this COVID is something which will not go away. It looked like it has gone away. It has come again. It has come again. It has come with much more vengeance. So if it comes once again, what will happen? Let me tell you, all news anchors who never knew any science became virologists, immunologists, and all of them, aisa bajaya, healthcare scripts पूरा roof पहुंच गया. So if you ask me, had the COVID not come, Thyrocare would have not reached that kind of valuation. COVID had pushed a few companies, completely destroyed them to the ground. And some companies it has lifted. So नसीब अपना अपना, किसी किसी को ऊपर गया, किसी किसी का नीचे गया. कुछ कुछ कंट्रोल किसी को नहीं था, सरकार को नहीं था, फाइनेंस मार्केट का नहीं था, but it was all panic driven valuation for healthcare. But then if you ask me, are you happy that COVID has left us free? Yes, I am happy. But had COVID not left us free, we don't know what would have happened. So these are all very difficult to tell. But having said that, this particular correction of the market is not complicated by the conventional correction factors. This COVID is an unconventional correction factor, and it has not corrected. It is not only US, it is worldwide, and its impact still we don't know what it is. आज भी फिर से बोल रहा है in Bengaluru you will be fined if you don't mask. So it looks like this COVID still is hanging around, and the impact of COVID in this first and second wave still has not been fully understood industry wise. So ये सब मिलके मैं इतना ही कहूंगा कि diagnostics companies had a roller coaster much bigger than anyone else. Right, sir. So, Jagdish, you go next. Then we ask Gaurav. Yeah, Jagdish. Hello.
या जगदीश बोलो. मेरा आवाज आ रहा है सर? Yeah, go ahead. हाँ, मैं योगेश सर की जो बात थी उसके साथ कंटिन्यू करना चाहता हूँ। योगेश सर ने बहुत अच्छी बात की है, बहुत सारे चैनल पे मैं भी पूरा दिन देख रहा था। तो आईटी सेक्टर में बहुत सारे लोग कि भाई और डाउन जाएगा, कोई बोल रहा था ऐसे अपसाइड जाएगा। तो सर मुझे पूछना था कि रिटेल इन्वेस्टर के लिए म्यूचुअल फंड में जैसा ऐसे टेक्नोलॉजी फंड है, टाटा डिजिटल फंड है, उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए? मैं इसको जवाब मैं नहीं दूंगा, और कोई एक्सपर्ट रहेगा तो बताइए. योगेश सर से रिक्वेस्ट है, योगेश सर. No, sir. So, I mean, no specific recommendation. Honestly, I always refrain from doing it. But I will speak for myself. Insofar as I am concerned, my SIPs are continuing. It all depends on your risk appetite, whether you wish to invest in sectoral funds, thematic funds, small cap, mid cap, etc. But I will speak for myself. I continue to follow the discipline of every month. Thank you, sir. Yeah, Jagdish, basically what you understand well should be the place where you should be investing or putting in your money. So understand first and then decide which way or which asset class you want to go. So, and that too in a staggered manner. I think over a period of time, gradually you will learn and obviously would be in a better place to make decisions for your own. Yeah, Gaurav, you can go next. Thank you for having me here. And Dr. Velumani, this is the first time I'm listening to, and I'm just blown away. You have taken me back to school again, I would say. Just one question I had was that what were your major top one or two learning while scaling Thyrocare? Initial building, you told us, I've understood, but while scaling, while making it big, what are the top two or three things that you would have learned or you would have made a mistake over there? If you could tell about that. Yes, scaling up is something which I did not know the word scaling up. You keep working every day, you enjoy working, and then when it was, I had a first center in South Mumbai. Why not Borivali and Thane? It worked. Then why not Surat, Nasik, Pune? It worked. Then why not Delhi, Calcutta, and Chennai? It worked. So kept on moving around, and then the concept was so powerful. There was nothing known as I planned to scale up, and it got scaled up. I must tell you, the company never had a marketing department for 15 years. To that extent, the company was growing, and I felt I am being pushed. When you are pushed, you can't run. To that extent, there was nothing, any kind of mistakes I could sense, because when you don't grow, then only it is mistake. Challenge was to get people, train people, retain people, and then get more space, and then get more machines, arrange them. Then you have to bring in automation, you have to bring in total automation. So the floor occupied me. Never I was trying to make myself. 17 long years Velumani Thyrocare में करता क्या है किसी को पता भी नहीं था. So to that extent, there was a complete focus on the business and the business model. I think I will tell you one punchline here. When the business model is very good, you don't need a model to grow the business. That is a brand ambassador. So to that extent, the business was growing, and I think if at all, learning was simple. Whenever the volume doubles, you are entitled for a 10% discount from the vendor. Even today, even after reaching this volume, I think only uniqueness which I had, which probably my peers did not have, was my ability to understand cogs of cogs. I want you people to understand what this means. Cogs is cost of goods. So when in any business, if you know the cost of goods, you can do the business. But if you know the cost of goods for the cost of goods, in other words, if you understand your vendor's balance sheet, and if you know that vendor has too much to dilute once you have volume,
I did exactly the same. All investors, all my peers were purchasing after negotiating for 10% of bargaining with the vendor. I'll tell you one thing which happened. Vitamin D was introduced in year 2010. All my peers started doing it. I didn't do it. So the vendors came to me and told, see, sir, A, B, C, D, all are doing, and why are you not doing? So I asked them, at what price are you supplying? Sir, for everybody, I'm giving a 250 rupees per test. For you, because I know you have power to get volume, 200 rupees I'll give you. So this is how they pitched to me. I said, no, sir, why no? Gentlemen, I want a price of $1. $1 that time was 50 rupees. I want $1. Sir, that is not possible. 200 rupees is what we are giving. You are asking for 50 rupees. Gentlemen, I want 1 million pieces. I am going to pay advance. The guy who had come never knew what is 1 million's total number of zeros. So he went back, brought his another manager, one more manager. Finally, all of them agreed that they will give me for 120 rupees. I told them, tomorrow morning you come, I'll give you 5 crore check. I want $1. So next day morning they had come. I paid $1 million and I purchased 1 million tests of vitamin D. Trust me, no one could compete with me, and that is the secret of scaling up. I packaged vitamin D. Entire country was doing vitamin D test alone for 2,500 rupees. I was the only guy who did the vitamin D, B12 along with so many other tests only for 1,600 rupees. Trust me, the punchline here is there is no business on this earth closed down because they have priced it low. That gives rise to one more punchline. जो कोना चाहता है वो कभी खोता नहीं है, जो कोने से डरता है वो कभी पाता नहीं है. Sorry for loading with too many punchlines, but then मेरा story ऐसा ही था. No, sir, that was really great, sir. Thank you. Thank you for answering. I have another 5 minutes. Yeah, sir. So, guys, any one of you, if I have any questions from sir, you can send in a request or Ravi, Gaurav, Yogesh sir, Rani, Samad, Yes, please. any. Sir, Velu sir, I have one question from Ravindra. He has asked how you see the use of glass versus plastic in diagnostic space. So he was asking on that front the use of just like Tarsans and Borosil, the comparison he was asking. Yeah. I think the usage of plastic in the laboratory can never be brought down because of the plastic environmental fear. It's very difficult to use glass. Can you use a glass gloves? You can't. So, in fact, let me also honestly tell you, before I came into business, the plastic in the laboratory usage was not there. Those days it was all glass. You collect blood in a glass test tube, and the glass test tube, if you collect inside the laboratory itself, the glass is very safe to handle. How can a glass test tube be brought from Borivali to Borivali to Dadar? You have to hold it straight. Glass cannot be covered using a screw cap, so you have to put a cotton in the cap of the test tube. So by any chance, if you do it, when you reach Dadar, your cotton will have drunk the entire blood. Trust me, I was the first guy to bring in a plastic vial which looks like a cigarette, which can bring in 1 milliliter of serum, which is sufficient for doing a number of tests. And I introduced a barcode for that vial. This was done in 1998.
and the entire industry moved from glass to plastic vial. I'm only talking about one part of one piece of glass to plastic movement. But having said that, those days we never bought hand gloves because fear नहीं था. अभी ये कोविड आने के बाद बिना मास्क, बिना ग्लव्स, बिना व्हाट यू कॉल एस पीपीई काम करने के लिए कोई तैयारी नहीं है. So which means every cost has gone up. In fact, the laboratory costs have gone up because of COVID. A lot of safety measures need to be made. Cutting the long story short, laboratory may not be able to replace plastic by anything more than 10%. Thank you, Prince ji. I'm truly overwhelmed, sir. In fact, I was, writing some of your punchline that ended up becoming a thread. Very, very curious to understand how does the current day looks like. I mean, after scaling up, building businesses, selling. कैसा आपका दिन दिखता है and how do we get a chance to meet in case if we want to meet sometime, someday? Actually, I've been talking on many various forum, and sometimes I tweet it before I go there. Sometimes they want to keep it a closed event, so they will advise me not to tweet it. But having said that, my talks are available a lot in YouTube, not post exit. But any of you can arrange for a venue, and in that venue, as long as 100 plus people are there, I will come and will share with you what was the journey of a man who never knew what is business, how he got into the business, and a man who never dreamt that he would have a listed company. He had a listed company. And I also will tell what is fun, true fun once you exit, because I am dividing my life into two innings. The first innings I had too much of time, no money at all. Second innings, too much of money but no time at all. The true life is when you have enough money and enough time, and I think post exit I am truly enjoying. That gives rise to one more punchline. The title of my talk, if you invite me, will be Enter, Enjoy, Exit, Again Enjoy. So Sir, so we are headquartered out of Navi Mumbai. I'm not sure how soon you'll be traveling here, but we have 400 employees at our headquarters, 700 employees at Textbook. Uh, if I can come to you, I think I would definitely looking forward to your next event. But I shall reach out to you for sure. Yeah, sir. my Twitter bio has an email ID. Please notice, and you can write to me, and I will be very happy. In fact, the core job for the next phase of my life is, so far I was motivating employees. The next innings will be I will be motivating employers, so that they create more employment, and creation of employment is business. If there are any entrepreneurs here, trust me, the definition of business is have more people than required and keep all of them engaged. You will be very powerful. In other words, whether you are an entrepreneur or an investor or a trader, the punch is, जो काम करते हैं वो बुढ़े होते हैं, जो काम कराते हैं वो बड़े होते हैं. आदमी रखो, काम कराओ, बड़े हो जाओ. Thank you very much. I have something to attend to. I enjoyed the space. Thank you so much, sir. And it was all spaces, and every time we get to know more on your true side, and so much of insights and punchlines. Thank you so much for your time, sir. Thank you very much. Bye. So, guys, it was really wonderful with Velumani sir, and he often bless us with his presence in our spaces.
So those who find value in our spaces, they can connect with our handles, so that in future when we hold spaces with the different industry veterans or sector experts, so you get to get the notifications and you can join us. And obviously everyone in these spaces is important. Listeners are important, those who ask relevant questions are important, and anyone who adds to your knowledge is indeed very important. So with this, if anyone from the speakers has anything to add to today's topic, we can like in a minute or so we can move on to various speakers, and else any audiences if have any questions, then we can take up questions also. No, Prince, thank you for this. Thank you, Ravi, to speak alongside with you. So, just to conclude, the tagline of the subject of this space is interesting, and I firmly believe in that. Is that price is what you pay, value is what you get. I firmly believe in that. So, it all depends on what you think is the correct price, and also to layer on, if you throw peanuts, you get monkeys. So you pay properly, you get thorough advice or get a thorough product, whether it is a tangible or an intangible. Thank you so much. Thank you all. Thank you so Thank you much. so much, Yogesh and Prince. It's been great pleasure to be with you all. Thank you, Ravi. Thanks for joining. So, guys, if any one of you have any questions or want to interact, you can send in the request, or you can also share feedback about today's spaces. You can write over my handle or Samarth's handle, so that we get to know what we can do better in future spaces. And any input from your side is more than welcome. And anyone who has any who we may call sector expert or anything, any thing which can add on educational front, they can contact us. We can have spaces. And as a standard disclaimer, none of us are SEBI registered, or so any discussion, if any names were taken during the discussion, those are purely for educational purposes. We are not here to say on buy sell side of any equity or any asset class. Apart from this, the today's topic, which is very intriguing one, was kept because we often see most of the hard is after the price, right? Very few people talk about value, although those who are into this market, or maybe those who get to know about the intricacies of investing, they know the importance of value. So if we are able to find the value of a business, we can compare it with the market price, and we can relate whether the price is below its value, it's on par, or it's exceeding its value, on the basis of which we can decide on our investment. And especially those who are new to market, I would advise them to, first of all, they should get to know themselves, what kind of person or what kind of temperament they have, what are their goals, and what are their time horizon of investment. The investment should be goal based, so that you should be able to know how much you have to save, how much you have to invest, and when you have to realize that, so when your goals are achieved. And those who have less experience, they may go passive way. And additionally, like if they are feeling that they don't have time to devote to learn the nuances, or maybe analyzing businesses, or they don't want it on their own, they can go to quality advisors, because paying the upfront piece is better than losing directly in the market. And again, see, it is person specific, and those who are into trading, they must understand it's a full day, or what we say, it's a business, it's a full time activity, also a zero sum game. So you should be aware what you are doing. You should not be like blindly copying what has been told over social media or TV, or
tips in Telegram or wherever you get, or maybe peer or family, because it is your hard-earned money, and if you don't, if you won't be doing any due diligence, then chances are high that market will treat you not in a very acceptable manner, and mostly when you ask of perception about market, most of the people say that ये सट्टा है या this is of pure speculation. So basically कहने का मतलब इतना ही है कि भाई आप जो समझेंगे और करेंगे तो आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, और आप ब्लाइंडली करेंगे तो चांसेस हाई हैं कि आप लूज करेंगे. समर्थ भाई, आर यू देयर? Vixie, you can unmute and ask your question if you have any. Am I audible? Vajpayee ji? Samarth, Vixie, anyone? Anyone from the audiences? They can. Vajpayee ji, am I? I was audible. आप सुना, आवाज आ रही थी, सही है. Right. So Vixie, or there are many requests. I'll pull you as a co-host. So you also approve the request if you get those. So Vixie Dogra, if you can hear us, you can unmute yourself and ask your question, please. I have approved a couple of requests. So, guys, one by one, you can ask your question. Re Cruiser, you go first. Yeah. Thank you so much. My question is, I want to invest in the Indian IT industry. Now, should I pick one or two companies, or should I buy the index? An IT index is my question. A follow-up is Indian IT index better, or should I go for NASDAQ 100? Yeah, thank you for your question. So, see, I won't be giving any specific input because I don't find myself in that position. But again, if you understand the IT sector well, so that would be a thing when you can go directly investing in companies of your choice. But if you feel you are not well versed with the working in IT industry and what are the data points which you need to look before investing, in such case it would be better to go thematic way, or maybe ETFs or mutual funds which are into IT space. And coming to Indian or the US space you were asking, so primarily Indian IT space and consulting is more on B2B side, and for US they are more on B2C side. So the business dynamics is different for both in my limited knowledge. So if you find value there, you can also go that way. But again, you have to decide on yourself what you understand well. You should go that way. I hope that helps you. Vajpayee ji, anything you have to add in limited time? हाँ, देखिए, इंडियन कंपनीज में अगर करना है तो आप इंडियन कंपनीज में आप इंडिविजुअली भी कर सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट जितनी भी टॉप लेवल की कंपनी है वो पैरेलल ही एक तरह से ग्रो करती हैं या उनमें डिक्लाइन आता है, और आपके पास सारे के डाटा अवेलेबल हैं. तो जिन कंपनीज का आरओसी सबसे अच्छा है तो आप वहां पर अपने पैसे को पार कर सकते हैं, या आप उसकी बुक वैल्यू देख ले, उसकी अर्निंग प्राइस पी रेशियो देख लें, और अगर आप कॉमन करना चाहें तो कॉमन भी कर सकते हैं. आप दोनों में बराबर बराबर भी कर सकते हैं. ये आपके चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है. अभी चूंकि वर्तमान में हमारी आईटी इंडस्ट्री एट्रिशन की उससे प्रॉब्लम से गुजर रही है, तो थोड़ा सा उनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उस पर एक मार्जिन पर असर आ रहा है. वो मेरी समझ से 1 या 2 क्वार्टर में हो सकता है कि ये लगभग खत्म हो जाना चाहिए या कम हो जाना चाहिए.
क्योंकि जो भी लोग चेंज कर रहे हैं वो एक साल से पहले तो दूसरी कंपनी चेंज नहीं करते हैं। तो आई होप कि नेक्स्ट 2 क्वार्टर जो होंगे वो इनके लिए फिर धीरे-धीरे कंफर्ट शुरू हो जाएगा। तो आप उसमें अपने चॉइस करके जिन कंपनियों के अच्छे आपको वैल्यूएशन दिखाई पड़ रहे हो, जिनकी ये दिखाई पड़ रही जिनकी नेटवर्थ सही है और जिनका मैनेजमेंट टॉप क्वालिटी का है। आप ये तो अपने हिसाब से आपको डिसाइड करना पड़ेगा, चूंकि हम लोग सेबी रजिस्टर्ड नहीं है, इसलिए हम लोग एज ए इंडिविजुअल किसी भी स्टॉक को रिकमेंड नहीं करते। बट आप इंडियन कंपनी में भी कर सकते हैं। और जहां तक सवाल नास्डा की कंपनी का है, तो फिर वहां के लिए उसके अलग से आपको पूरे सब पैरामीटर्स चेक करने पड़ेंगे, तभी आप उसमें एंट्री लीजिए। उस पर हम लोगों का बहुत ज्यादा नहीं है। जी, right, Vajpayee ji. So, Deepak, you go next. दीपक, इफ यू कैन हियर, आप अपना सवाल पूछिए। बाबू, आप पूछिए अगर दीपक जी बिजी हैं या उनको सुनाई नहीं दे रहा है। सीबी, Hi, good evening. या So, Prince, very interesting space. I was listening to Velumani Sir all along. Thanks for that. And my question is related to crypto and Web3. If that is okay discussing here, is it okay? can you be a bit louder? I missed what you just said. My question is related to the crypto and Web3 space. Is that okay if I go ahead? Or are Yeah, we only limited? yeah, you can. So, what is your? I think you're a very active investor, if I'm not wrong, and you follow track the markets, all the markets. I only track a limited portion within the Indian market. I'm not or maybe tracking US side. But again, I would try to take up the question in general sense. Or if you have anything to add on your part, we would more than happy to listen to you. Or Okay. No, I was just. What is your opinion on the current state of the crypto markets? That was my question. That is why I wanted to understand whether you're following it actively or. यार देखो, क्रिप्टो पे मेरा सीधा सा मतलब व्यू है, आई हैव नेवर इन्वेस्टेड और नोर डू आई हैव एनी प्लान्स ऑफ इन्वेस्टिंग इन क्रिप्टो। रीजन बीइंग ये रेगुलेटेड एंटिटी नहीं है, ठीक है। सो अनटिल एंड अनलेस वी गेट द रेगुलेटेड साइड, Clear stance या on the सो जब तक regulation. ये रेगुलेटेड नहीं होता है तो, और देखो मेरे को समझ में भी नहीं आता, ठीक, द टेक्नोलॉजी साइड, ब्लॉकचेन, वो सारा ठीक है, बट अगेन जो चीज रेगुलेटेड, और देखो यार सीधी सी बात, आप ये समझो, तो कोई भी सॉवरन है, कोई भी देश है, उसकी एक करेंसी है, राइट। तो वो दूसरी करेंसी इंट्रोड्यूस करके पैरेलल अपने आप मतलब क्यों काम खराब करेगा, एक रीजन बताइए। और आप देख रहे हैं कि इंडिया में काफी जो यंग इन्वेस्टर्स और मे बी कोविड इन्वेस्टर्स जिनको कह सकते हैं, ठीक है ना, जो पिछले एक डेढ़ साल में, तो देवर लाइक वट एवर क्रिप्टो, तो गवर्नमेंट ने उसको टोटल बैन ना करके उसको डिस्करेज करने के लिए जो टैक्सेशन है वो इतना हाई कर दिया है, ठीक है। और मैं No, government has done a proper job of discouraging. या सो दैट हैज बीन डन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ डिस्करेजिंग, कि भाई उसको फर्दर एनकरेज ना करके डिस्करेज किया गवर्नमेंट ने। एकदम से बैन करेंगे तो वो जो इतना पैसा लगा हुआ है दैट विल गो इन वेन। सो बेसिकली देखो यार, सीधी सी बात है, आप रिस्क जो आपको है वो कैलकुलेटेड लेना चाहिए, कभी भी इतना रिस्क मत लीजिए। देखो यार, आपका पैसा है ना, वो स्लोली ग्रो होता है। अगर आपको कोई कह रहा है कि भाई कोई मैजिक होता है या यू विल गेट रिच ओवरनाइट, तो दैट इज मतलब वो पहली बात तो पॉसिबल लगता नहीं है, बट होगा भी तो देर आर वेरी फ्यू इंस्टेंसेस कि भाई ऐसा हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में आप एक साइजेबल पैसा कमा पाते हैं, राइट। तो कोई भी चीज है यहाँ पे इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन होता है, क्या है कि भाई आज पैसे लगाए, कहीं से सुन के टिप्स ले लिया, किसी फ्रेंड ने सर्कल में बोला है, आपने इन्वेस्ट कर दिया कहीं पे किसी भी एसेट क्लास में, आप उसको समझते नहीं समझते वो बात की बात है, आप पहले इन्वेस्ट कर देते हैं, फिर आप होप इन्वेस्टिंग करते हैं, आप इस उम्मीद में रहते हैं कि हाँ भाई मेरा पैसा बनेगा। अगर वो करेक्ट हो रहा है
तो उस केस में भी आपको एक ये रहता है कि ब्रेक इवन पॉइंट और या मेरी कोस्टिंग पे आ जाए तो तब मैं इसको सेल करूंगा। और इसमें बेसिकली जो लॉस एवर्जन होता है उसके चलते आप फर्दर लॉस कर लेते हैं। तो यार देखो सीधी सी बात है, पैसा, देखो मार्केट बहुत ज्यादा, आप ये मान के चलिए कि मार्केट क्या है, बेसिकली जो सारे लोग हैं उनका जो मेंटेलिटी चलती है, जो उनका एक्शंस होते हैं, उसी हिसाब से तो मार्केट ड्राइव होती है। दैट कैन बी और कैन नॉट बी रैशनल, ठीक है ना। तो आपने देखा होगा जब यूफोरिया होता है तो एवरीबडी इज लाइक बाय एट एनी प्राइस, और जब अब मार्केट का करेक्शन आ रहा है तो एवरीवन इज लाइक कि भाई बॉटम बना कि नहीं बना और कितना नीचे जाएगा। सो देयर आर सो मेनी थिंग्स। तो जो हार्ड मेंटेलिटी है ना वो चेंज नहीं होती है, दैट रिपीट्स ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो वॉरेन बफे भी यही कहते हैं कि वो जो उनको डिफरेंशिएट करता है वो आईक्यू नहीं करता है, वो उनकी रैशनैलिटी है, ठीक है ना, कि भाई आपका टेम्परामेंट कैसा है। इफ मार्केट इज नॉट बिहेविंग द वे यू हैव एंटिसिपेटेड, इन दैट केस हाउ यू बिहेव डिसाइड्स द फ्यूचर कोर्स ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। तो यार देखो सिंपल है बट इतना आसान नहीं है कि भाई केक वॉक है। बट हाँ ये है कि आप अगर थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस कर लेते हैं और मार्केट में क्या नहीं करना चाहिए उस पर अगर आपका फोकस रहता है तो, और obviously patience or time, these are two elements which are very important to create wealth in market. Or I'll take a moment to ask our friends, those who have joined and not connected with our handles, kindly connect with our handles so that in future also we can have more spaces, and that encourages us to bring more knowledgeable people for the betterment of all. And it's basically a educational forum, or where we mutually learn from each other. So CB, I think I helped in a little way with your question. Any follow up question or anything from your side? Yeah, nothing. I mean, I just wanted to. Can you hear me? Hello. हाँ हाँ बोलो भाई बोलो। Nothing. That's it. That's चलो थैंक्स फॉर द अप्रिशिएशन यार, हमें भी अच्छा लगता है कि आप लोगों को जुड़ के, सी वी ऑलवेज ट्राई कि मैक्सिमम जिनको मार्केट की नॉलेज है, समझ है, ठीक है, और वी, आपने देखा होगा जो मेरी स्पेसेस में पहले भी जुड़ते हैं, वी आर नॉट, it. और हम प्रॉपर डिस्क्लेमर वगैरह हम दे के चलते हैं। रीजन बीइंग आई डोंट वांट कि भाई मान लो कोई एक हम नॉर्मल डिस्कशन चल रहा है और उसको कोई बंदा जो सुन रहा है नया मार्केट में उसको बाय सेल रिकमेंडेशन ना ले जाए, तो वी प्रॉपरली गाइड देम। No, that is how it should be, right? राइट राइट। सो गाइज जिनको लगता है You should not be wrong. कि कुछ वैल्यू एडिशन हो रहा है और हमारी स्पेसेस में आके आप कुछ सीख रहे हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है हमारे साथ जुड़िए। Look at the value because the value is the main. Stancat, if you can hear us, kindly unmute and ask your question, please. Okay, wow, thank you so much. I was really fascinated by the topic, although I got lost when I entered and I saw that you were communicating in, I don't know whether it's Hindu. So I just took a leap of faith to say, oh, let me hop in. Probably I can speak and someone could hear me. I'm happy to hear that you also communicate in English. I hope you can hear me. Yeah. Thank you. Thank you for coming in. Would love to, if you have anything to add, we would be more than happy to listen to you. Awesome. Yeah, I feel this space is mostly attended by Indians, right? Because I can see most of the audience here are mostly Indians. Yeah, thank you. All right, so the topic I said earlier really fascinated me. It's value or price. What to look for. Again, I really this is I'm in the business of classroom and I train people on. We have an academy where we train students, in engineering drawings and engineering design. So over the time, we always hear people complain about, oh, it's too expensive, it's too this, it's too that. And I always bring in this concept. While we're in school, we did this stuff they called cost benefit analysis. Okay, that is
before you conclude that a project is viable or a project is expensive or worthless, you have to check the value in respect to the price. All right. So if the value of the product or the service has little effects compared to the price, then you can say it's expensive or it's not viable. I don't know that you can hear me, so I don't just keep talking to myself. Hello. Yeah, we can hear you. Continue. Okay, great, good to know. All right, so this concept is very difficult for some persons to really understand the difference between this price and the value. Most people just focus on the price, I believe this is the reason why we have so many counterfeit products and services, because people try to and see how they can beat down value and then meet up to the price demand of people. Okay, because if you really want value, then you should go for the worth of it. All right. So most of the time, things that are of value are really not cheap. Things that are cheap are not really of value. If you can take, for instance, you see stones everywhere, but you can't find gold everywhere. You get, so if you need gold, you have to go dig for it. So you don't expect to just see a gold by your side. But if it is gravels, you can see gravels all around, and then you expect gravels to be cheap compared to gold. So that is in terms of product. So in terms of services, there are some people that are rendering services that have so much value. Okay, like for instance, now we do training and we know the kind of value we give as a result of our training. Then we know other people who just need students to come for their training, so they beat down their price. So when we get students, they come and they say, "Oh, but so person is charging so amount. How come your own is expensive?" La, 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 la. You get, so sometimes it's so annoying trying to differentiate between value and price for some persons can really be very, very difficult, because so many people are so focused on the price. You get, so I believe this concept is something that we should really differentiate and really expatiate more on. That before you can say anything is viable or anything is expensive, you have to check the what are the deliverables, what are the utilities, what are the things that this service or this project is bringing. Then when you compare the value, then that is what we should focus first on, the value with respect to the price. All right, I'd like to stop there. Thank you so much, Stangard, for adding valuable inputs to our spaces. It is really encouraging and helpful for our audiences. Thanks for connecting. So next is Kalpurush will come to you. In the meantime, Happy was waiting. Happy, you can unmute and ask your question, please. Thank you, sir, for taking my question. ये मैस्टेक और टाटा एलेक्सी जो मिड कैप आईटी हैं, उनका क्या फ्यूचर है सर? मतलब अब वो क्या प्रोडक्ट डिजाइन में है, कुछ सर्विसेज में? जैसे मैस्टेक का यूरोप में ही ज़्यादा वो था बिजनेस, अभी वो यूरोप में जो प्रॉब्लम आ रहा था उससे कुछ इम्पैक्ट आना है क्या उसमें? या हैप्पी सी, मैं ये जो आपने नाम लिया इनको ट्रैक तो नहीं कर रहा हूँ, बट अगेन जो यूएस साइड में बिजनेस है और वहां पे जो अनसर्टेनिटी चल रही है या जो इन्फ्लेशन है, या फिर आप कह सकते हैं कि जो एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गई है ड्यू टू ऑनगोइंग एट्रिशन, सो बेसिकली इम्पैक्ट तो अक्रॉस मतलब लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप सब पे आया हुआ है. सो हाउ लॉन्ग दैट विल बी सस्टेन्ड इज अ क्वेश्चन टू आस्क फॉर. And again, seeing like in the last 1.5 year, the companies have really run up. So obviously we have a concept of reversion to mean. तो बेसिकली रिवर्जन टू मीन कहने का अगर सिंपल समझे तो कोई चीज ऊपर जा रही है, देखो पेंडुलम की तरह चलता है. मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट में कोई भी प्राइस हो गया या मतलब कोई भी इक्विटी का प्राइस एक ही डायरेक्शन में जाएगा. वो कभी अप्रिशिएट होगा, कभी कंसोलिडेट होगा, कभी
वो करेक्ट भी होता है। तो लाइकवाइज डिपेंड करता है। आप एक तरीका ये भी है, सी दैट इज नॉट द ओनली वे टू गो अबाउट इट, बट थोड़ा एक आइडिया लगाने के लिए कि भाई हिस्टोरिकली जो उनकी वैल्यूएशन रही है उसके कंपैरिजन में अभी वो कहाँ ट्रेड कर रहा है, तो दैट वे यू कैन गेस कि भाई क्या पोजीशन है और कब। और सी when you do it in a staggered manner in the form of SIP, in such cases आपका ये रहता है कि ब्रॉडर मार्केट में आपको अनसर्टेनिटी भी है तो उससे आप इम्यून हो जाते हैं। ठीक, सी मान लो आपको कोई अच्छी कंपनी आपने आइडेंटिफाई करी है, उसका बिजनेस आइडेंटिफाई करा है और आपको लग रहा है कि उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स 3 years 5 years डाउन द लाइन अच्छे हैं, ठीक है। तो और ये नहीं है कि आपने एक बार इन्वेस्ट कर दिया तो उसके बाद आपका काम हो गया। आपको मॉनिटर करता रहना पड़ेगा कि भाई आपने उसके क्वार्टरली रिजल्ट्स वगैरह देखे या उनके पीयर्स हैं वो कैसा कर रहे हैं, डिमांड आ रही है नहीं आ रही है, और उनके मार्जिन्स हैं वो सस्टेनेबल है या नहीं है, या फिर जो कैश फ्लो या एक्सेस कैश कैश कंपनी में आ रहा है वो उसको एक्चुअल मतलब सही तरीके से री इन्वेस्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। सो देर आर टू मेनी क्वेश्चन। स्टैगर्ड वे में आप इन्वेस्ट करते हैं कि एसआईपी की फॉर्म में, तो आपकी एवरेज जो कॉस्ट एवरेजिंग है वो प्रॉपर आ जाती है। एंड दैट वे आपको बहुत ज्यादा आउटर मार्केट ब्रॉडर मार्केट की करेक्शन से फर्क नहीं पड़ता है। वेल्थवर जी, एनी स्मॉल इनपुट ऑन दिस इफ यू वांट टू ऐड? जी जी कल कल आपने जो एक स्पेस किया था उसकी रिकॉर्डिंग तो अवेलेबल होगी। तो कल का स्पेस बड़ा इंपॉर्टेंट था जिसमें कि आईटी कंपनीज के डिफरेंट आईटी कंपनीज पर काफी ब्रॉड डिस्कशन हुआ था। तो मैं इनको ये कहना चाहूंगा कि अगर वो थोड़ा उनके पास समय मिले तो उसको सुन सकते हैं। और दूसरी बात वो जो कहना चाह रहे थे कि यूरोपियन कंट्री की प्रॉब्लम से और अमेरिका की प्रॉब्लम से इफेक्ट पड़ेगा या नहीं, तो देखिए ये तो आप मान के चलिए जब भी कहीं कोई प्रॉब्लम आएगी उसका इफेक्ट तो पड़ता ही है। बट ये प्रॉब्लम क्या एवर लास्टिंग है ऐसा तो है नहीं, प्रॉब्लम्स हैं तो खत्म भी होंगी। तो इसलिए इन कंपनीज पर अगर आपको बिलीव है तो आप उस पर बिलीव रख सकते हैं। और कल की अगर रिकॉर्डिंग आप सुन लेंगे तो आपको मास्टेक के बारे में भी उसमें काफी डिटेल में दिया गया है और टाटा एलेक्सी पर भी काफी डिटेल में डिस्कशन हुआ है। तो दैट विल बी बेटर क्योंकि उसमें हमारे एक एक्सपर्ट थे आईटी के, उन्होंने पूरा डिटेल में एक एक कंपनी का बारे में बताया है। और जहां तक प्रॉब्लम है जी, तो अभी फिलहाल आपको ये देखना है कि जब तक वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती थोड़ा सा आप इसमें स्टैगर्ड वे में ही अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो करिएगा। So, सभी audiences, all audiences who have connected, we record our spaces and one or two handles also record and share it on their YouTube. So, जिनको लगता है कि कुछ उनका मिस हो गया है या किसी रीजन से वो स्पेसेस अटेंड नहीं कर पाए, फॉर एनी रीजन दे वर अनेबल टू अटेंड आवर स्पेसेस, दे कैन check out our handles and they will find the recordings of the session. Yesterday we had a wonderful session with Ameya. He is an IT expert with more than 2 decades of experience. So guys, ऐसा है आपके बहुत सारे questions हैं, आप अगर उनको revisit करेंगे या सुनेंगे recording को तो those answers you will get। और in the meantime अगर फिर भी आपको कोई question या problem आती है तो आप हमारे handles पे हमें tag करके और वो questions लिख सकते हैं। हो सकता है कि हमें उनके जवाब पता हो, और नहीं पता होंगे तो we will try to get them answered from the concerned person. We have a network of many good analysts or industry veterans, so they are available on Twitter and most of them you must be knowing कोई genuine questions हैं buy sell recommendation के अलावा, तो we will direct those questions to them and request them to answer your questions. So any Vishwesh, यस सर। या बताओ यार। तो सर मेरा आपको कुछ क्वेश्चन थे, जैसे पहला क्वेश्चन तो ये है, अभी हमारे पास जैसे बास्केट में इन्वेस्ट करने के लिए काफी सारे ऑप्शन है, जैसे स्मॉल केस हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या फिर जैसे वो ई, 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 क्या कहते हैं ईटीपी वो हो गए हमारे। तो इन सब में मतलब हमें किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। और जैसे हम स्टॉक की बात करते हैं तो हम आजकल मैं जैसे देख रहा हूँ लोग स्टॉक की बात करते हैं, बाकी के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट के बारे में कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं हमें।
तो हमें बाकी के मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में भी जैसे टाइम टू टाइम कैसे अपनी मनी का फ्लो एक इंस्ट्रूमेंट से दूसरे इंस्ट्रूमेंट में करते रहना चाहिए, या कितना कितना हमें पोर्टफोलियो किस किस मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट में रखना चाहिए। देखो विश्वास, जो ये आपका सवाल है बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है, और मेरे को लगता है शुरू में जो मार्केट में आते हैं तो सभी को ये दुविधा रहती है कि वेयर दे शुड इन्वेस्ट, राइट? सो एवरीवन हैज सच डायलेमा और मे बी कंफ्यूजन वेयर देयर मनी शुड बी इन्वेस्टेड। तो इसका देखो बहुत सिंपल सा है। सबसे पहले मैं ये कहता हूँ कि भाई आप अपने आप को समझिए, ठीक है? देखिए आपका टेम्परामेंट कैसा है, अब कोई पैसा आपके पास है। नॉर्मली मैंने ये टेंडेंसी देखी है कि लोग, उनको इमरजेंसी फंड के बारे में नहीं पता है, वो लेवरेज होके कहीं से पैसा उठा के, और उनको लगता है कि मार्केट अभी जैसे पीछे बुल फेस चल रहा था तो उन्होंने पैसे उधार पे लेके भी मार्केट में पैसा लगाया है। तो विशेष होता क्या है कि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है, ठीक है? तो मान लो मैं एज्यूम करता हूँ कोई भी आपकी जो एक इनकम रहती है, ठीक है, उसमें से नॉर्मली क्या होता है कि भाई आप एक्सपेंसेस करते हैं और उसके बाद जो बचता है उसको आप सेव करते हैं, ठीक है? बट नॉर्मली आइडियल वे शुड बी कि भाई आपका जो कैश फ्लो है, आपकी जो इनकम है, उसमें से आपको पहले एक पोर्शन आप डिसाइड कर सकते हैं कि कितना आप स्पेयर कर सकते हैं। तो वो सेविंग्स पहले आपको असर्टेन करनी चाहिए, ठीक है? और उसके बाद आपके एक्सपेंसेस होने चाहिए। तो इनिशियली अगर आप, इफ यू लिव बिलो योर मींस, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम और वो पैसा जो आप बचा के अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, ठीक है, दैट दैट इज मोर लाइक कीपिंग योर मनी एट वर्क, ठीक है? दो तरीके होते हैं ना बेसिकली, जो रिच डैड पुअर डैड में भी बोला है कि यू वर्क फॉर मनी और यू मेक द मनी वर्क फॉर यू। तो इसमें बहुत डिफरेंस है, जो बहुत सारी बेसिक न्यूएंसेस हैं कि भाई आपको एसेट और लाइबिलिटी का फर्क समझना चाहिए, इमरजेंसी फंड क्या होता है, हेल्थ इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या है, ठीक है ना? ये पर्सनल फाइनेंस के बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, और दिक्कत पता है क्या है, इनको हम बहुत लाइटली लेते हैं, और जबकि ये बहुत रेलेवेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है? आप किसी को आप ये बात बताओगे ना तो कहेंगे यार ये तो मुझे पता है, कौन सी नई बात बता रहे हो। बट अगेन आई विल एम्फेसाइज कि भाई ये बहुत सारी बेसिक चीजें लगती हैं, बट ये आपके लाइफ लॉन्ग बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। अगर आप प्लान करके अपने फाइनेंसेस को चलेंगे, स्मार्ट वे में चलेंगे, तो मैं बेट कर सकता हूँ कि आप बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। अब मैंने नॉर्मल एक मार्केट परसेप्शन देखा है कि लोग कहते हैं कि यार जिसके पास अच्छी कैपिटल है ना लगाने के लिए, वही ग्रो कर सकता है। अब मेरे पास 1,000 रुपए हैं, 10,000 रुपए हैं, 20,000 रुपए हैं, इनको इन्वेस्ट करके मैं क्या ही कर पाऊंगा? बट दे फॉरगेट कि भाई आप ये तो देखिए कि आपके पास अभी इतना है, आप उसको अच्छी जगह इन्वेस्ट करेंगे, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपकी अर्निंग्स बढ़ेंगी। आप सेविंग अगर बढ़ाएंगे और उसको इन्वेस्ट करेंगे, तो ऑब्वियसली आप, ये नहीं है कि हर कोई वारन बफे बन जाएगा या और कोई अच्छे पहुंचे हुए झुनझुन बन जाएगा, ठीक है? लेकिन ये है कि आपके जो पैरेलल हैं और जो इस चीज को इग्नोर कर रहे हैं, उनसे आप बहुत बेटर प्लेस्ड हो जाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने आप को समझिए, फिर आप ये देखिए कि आपकी क्या सेविंग है, आपके क्या गोल्स हैं, आप किस लिए पैसा, आपको ये तो नहीं है कि नियर फ्यूचर में वो आपको पैसा चाहिएगा। अगर ऐसा कुछ है तो आप उसको मार्केट में मत लगाइए, क्योंकि मार्केट की वॉलेटिलिटी का आपको नहीं पता है कि आज वो अप्रिशिएट हो रही है, कल को करेक्ट हो रही है, यू नेवर नो। तो आपका गोल भी होता है, तो एक गोल कहते हैं ना, 3-5 साल का आपका कुछ गोल होता है। तो गोल के पास भी ये नहीं है कि आप वेट करो कि हाँ इतना टाइम मैच्योर होगा तभी। तो उसमें भी आपको स्टैगर्ड वे में जैसे इन्वेस्ट करते हैं, तो स्टैगर्ड वे में आप अपना पैसा निकाल भी सकते हैं जब आपका लगता है कि आपका गोल अचीव हो रहा है। तो बेसिकली पैसिव इन्वेस्टिंग की, जैसे आपने जो स्मॉल केस या फिर क्या ईटीएफ म्यूचुअल फंड की बात करी, तो देखो स्मॉल केस का तो यार मेरे को लगता है जिनका कैपिटल बेस कम है उनके लिए तो स्मॉल केस सही नहीं रहता है, क्योंकि वो आउटवे कर देता है आपके रिटर्न्स को, ठीक है? और अगर स्मॉल केसेस में फ्रीक्वेंट चर्निंग होता है तो उसमें टैक्सेस इन्वॉल्व हैं, तो काफी मतलब आपको हिट लगता है। तो एक कैपिटल बेस के बाद ही उन चीजों का, जहां तक मेरी लिमिटेड नॉलेज है, फायदा रहता है। कमिंग टू म्यूचुअल फंड और ईटीएफ्स, हाँ ठीक है, जिनको मार्केट की ज्यादा समझ नहीं है और ज्यादा एनालिसिस अपने आप पे नहीं कर सकते, तो पैसिव इन्वेस्टिंग वो कर सकते हैं। उसमें भी वो किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू ले रहे हैं या डायरेक्ट ले रहे हैं, उन चीजों का भी देखो यार। मार्केट में ना आसान पैसा नहीं है, आपको कहीं से कोई मतलब ये नहीं है कि आप
अगर आपको मार्केट की पूरी समझ हो जाए तो यू कैन बिकम द रिचेस्ट पर्सन, बट ऐसा नहीं है। लगता इजी है बट इजी नहीं है। तो जो न्यूएंसेस हैं कि भाई म्यूचुअल फंड में आपको क्या क्या देखना चाहिए, एक्सपेंस रेशियो क्या होता है, एयूएम कितना है, इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, और मैनेजर का जो मैनेज कर रहा है जो फंड को, उनका एटीट्यूड कैसा है, वो मतलब ठीक है, कुछ मतलब इंडेक्स को बीट करने के लिए फ्रीक्वेंट चर्निंग कर रहे हैं, उनकी थेसिस ये है कि भाई लॉन्ग टर्म के हिसाब से वो कर रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप उसको पढ़ने चलेंगे और समझेंगे तो देखो मार्केट में आप ये सोचो कि आप एकदम से आएंगे और कोई आपको रामबाण दे देगा और आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी, तो दैट इज फार फ्रॉम फीजिबल, राइट। तो यहाँ पे ग्रेजुअल लर्निंग होती है, सभी की होती है। मार्केट का सभी ये बोलते हैं, इवन इफ दे स्पेंड 3-4 डेकेड्स, तो दे वुड बी सेइंग वी आर स्टिल लर्निंग द मार्केट। ठीक है ना। तो लर्निंग इज वन इंडिस्पेंसिबल पार्ट ऑफ दिस मार्केट। एंड रैशनैलिटी जिसको आ गई कि आपने अगर अपने टेम्परामेंट को कंडीशन कर लिया, अपने आप को समझ लिया, तो आप औरों से बहुत बेटर प्लेस्ड हो जाएंगे। आई थिंक आई हेल्प यू विद दिस आंसर। वाजपेयी जी, एनीथिंग यू हैव टू ऐड? नहीं, ठीक है, आपने काफी डिटेल में बता दिया बहुत अच्छी तरीके से। बस इनको खाली एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं, जैसे अभी आपने झुनझुनवाला जी का जिक्र किया, तो देखिए जितने भी हमारे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स हैं, इन लोगों ने बहुत लंबा संघर्ष किया है और लंबे संघर्ष करने के बाद में इस जगह पे पहुंचे हैं। एक्चुअली में जो भी इधर पिछले 2 साल हो या कभी भी, मैं तो आपको बाबा बताऊंगा एग्जाम्पल के तौर पे कि होता क्या कि एक साल किसी साल मार्केट बहुत तेज चल जाती है, तो उसी को हम एक बेस मान लेते हैं, उसी को हम पैरामीटर मान लेते हैं कि सब पैसा डबल ट्रिपल हमारा एक साल में हो जाएगा। बट ऐसा लगातार नहीं होता। अगर लगातार ऐसा हो रहा होता तो फिर कोई कारोबार और करने की जरूरत नहीं पड़ती, सब लोग इसी में रहते। कोई कोई पीरियड ऐसा आता है कि 2 साल 3 3 साल तक मार्केट में पैसा नहीं बनता है, बट फिर उसके बाद जब वो बनता है तो कई गुना मल्टीप्लाई होता है। पीछे बता दूं आपको, 92 से 98 तक मार्केट इस तरह से डल रही थी कि कोई पैसा ही नहीं बना किसी का। ये जितने भी आप देख रहे हैं बिग झुनझुनवाला जी हैं या जो भी, जिन लोगों के पैसे ज्यादा बने, ये सब वही Y2K की जब प्रॉब्लम आई तो 2000 में हमारे सारे टेक्नोलॉजी स्टॉक ने ऐसा रनअप आया कि 1,000 रुपए की चीज 1 लाख रुपए की होगी। तो इसमें वेट करना पड़ता है। मैं केवल एग्जाम्पल के तौर पर ही बता दूं कि राकेश झुनझुनवाला साहब ने लास्ट ईयर वोकार्ड फार्मा में 2% की इक्विटी एक्वायर की। एक्वायर मीन्स मार्केट से ही लिया, कोई अलग से नहीं एक्वायर किया। हमारी समझ से वो 300 से 350 रुपीज के बीच में उन्होंने लिया उसको, और 800 का उसका रेट गया, बट उन्होंने उसको एग्जिट नहीं किया। अभी पार्शियल उनकी कुछ कम हुई है, तो हो सकता है कुछ निकाला हो उन्होंने। अभी भी वो होल्ड कर रहे हैं और उनके परचेज रेट से वो नीचे चल रहा है, मतलब 800 से वो 210 रुपए आ गया। तो मेरा कहना, जो आपने ये बात कही कि मार्केट में पैसा इजीली नहीं बनता, तो मैं उसी को केवल थोड़ा और एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि ये बात बिल्कुल सही है कि आपको हमेशा 2 गुना 3 गुना नहीं होगा, क्योंकि हमेशा 2 गुना 3 गुना होने लगा तो मार्केट पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगी, स्टॉक पता नहीं कहाँ पहुंच जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमको एक रीजनेबल रीजनेबल रिटर्न की एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए और इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर टाइम का वेट करना चाहिए। इसके साथ साथ आपको थोड़ी अपनी स्किल डेवलप करनी पड़ेगी वैल्यूएशन को आइडेंटिफाई करने के लिए कि स्टॉक प्रॉपरली वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है, ओवर वैल्यूड है। अंडर वैल्यूड भी स्टॉक अवेलेबल रहते हैं मार्केट में, ओवर वैल्यूड भी रहते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा अपने आप को स्टडी करना पड़ेगा, बुक से पढ़िए आप, पैरामीटर्स पढ़िए, आप जो है उसमें तब आप जो है उसमें। महेंद्र जी का और सवाल लेते हैं वाजपेयी जी, फिर ये 10 बजे इसको स्पेसेस को रैप अप करते हैं। 2 घंटे करीब हो गए हैं, ज्यादा ही हो गए हैं बल्कि। महेंद्र जी, आपका सवाल क्या है, आप पूछ सकते हैं। महेंद्र पटेल जी, अगर आप सुन पा रहे हैं तो आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। लास्ट 6 मिनट है गाइस, और किसी भाई का कोई क्वेश्चन हो, एनी क्वेरी फ्रॉम एनीवन, वी आर मोर देन हैप्पी टू टेक योर क्वेश्चन। और गाइज मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, तो जो मेरे हैंडल के साथ, हमारे हैंडल के साथ नहीं जुड़े हैं, प्लीज हमारे हैंडल के साथ जुड़िए, सो दैट आवर ट्विटर फैमिली ग्रोज एंड वी गेट मोर मोटिवेशन टू ब्रिंग मोर पीपल हु कैन शेयर देयर नॉलेज। या महेंद्र बोलिए। सर, आप क्रिप्टो के बारे में क्या कहना चाहोगे आप?
यार विप्रो के बारे में ऐसे अलग से तो कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बट यही है कि आईटी स्पेस में आप देख के चलिए। देखिए, आपको पता है कि ये जो टॉप की 4-5 कंपनी हैं, टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, एचसीएल, ठीक है ना, तो इनका जो पास्ट रहा है काफी अच्छा रहा है। इन्होंने लोगों को काफी अच्छा पैसा बना के दिया है, ठीक है। तो क्या वो सेम ग्रोथ सस्टेनेबल रहेगी आने वाले टाइम में, या इस इंडस्ट्री, इस सेक्टर में भी डिसरप्शन होने वाली है या होगी? या फिर आप देख सकते हैं कि हिस्टोरिकली वो किस वैल्यूएशन पे ट्रेड करती थी, और क्या बिजनेस डायनेमिक्स में कोई चेंज आया है कि जिसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन ऊपर गई है या नीचे गई है, या फिर उनका जो रेवेन्यूज वगैरह या फिर जो उनका एक्सपेंसेस थे उसमें कोई फर्क आया है कि नहीं आया। सो देर आर सो मेनी पैरामीटर्स टू सी। अगर आप प्योरली प्राइस को देख के इन्वेस्ट करेंगे तो देर कुड बी Please speaking तो देर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि वी कैन गो रॉन्ग, speak बिकॉज English, please. You are not understanding. ओके ओके। So basically, you need to see what all data points need to be seen in IT sector, and you have to compare those with the historical data points. Maybe the P on which way the utilization of excess cash with the company. Are they doing any buybacks or giving the money to the investors in the form of dividends? Or there could be a number of ways where, I mean, a number of data points which needs to be seen. So on the basis of that, you can take your decision, and obviously you have to keep your investing horizon a little longer, because in last 1.5 years IT had done really well. And as the broader market is correcting, the growth which has I mean is on the valuation front, many companies are correcting, and specifically IT sector. So one way to go about it, if you are very sure about the business and you have conviction, then you can invest in a staggered manner. You buy some bunches to say 5-10% on every dip, or maybe in either side, if the or your monthly SIP. So whatever the rate is, you decide a date and you invest a certain amount in a company. So that way also you can do. Yeah, Raksha. BP, you can unmute and ask your question, please. Thank you. Is it right time to redeem mutual funds? अभी जैसे मार्केट करेक्शन चल रहा है एंड एक्सपर्ट्स आर प्रिडिक्टिंग मार्केट नीचे जाने वाला है, सो इज इट अ करेक्ट टाइम टू रिडीम? एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब फिर से मार्केट स्टार्ट करता है बिल्टअप होना, उस समय फिर से री इन्वेस्ट करना, क्या ये अप्रोच सही है? See, in my personal opinion, this is not the right approach. It is more like timing the market, and nobody has timed the market over a longer period of time. So you need to decide. I mean, see, when you started investing, or maybe you did lump sum or SIP, whatever you had done, you had some thought or some goal in mind that I have invested this much amount of money, and I would be redeeming it at a certain point in time. So if that goal is achieved, or you need money for any purpose which is more important than investment, then again you can redeem. But purely listening to different people over social media or other platforms, and deciding on buying and selling won't be a wise approach. In that way, what if the market starts to go up from here? If you sell your holdings at this juncture, and then you regret and buy those at elevated prices. So timing the market is not the right approach. Time in the market is the right approach. Rashka, if you can unmute and ask your question, please.
Okay, thank you. Do you do business in Africa? Okay, you from Africa? No, we are from India, and we most of us do business only in India. So any Okay, input thank you. you have, or you just joined? I have to say Allahu Akbar. सो वाजपेयी जी, मुझे लगता है कि और हमारे पास, अच्छा बीपी फिर से, जी बीपी कहिए। बीपी प्लीज। So I heard you. In that case, are you suggesting to keep invested as it is as of now, or should we plan to make some major changes? Because over a long period of time, portfolio में ये दिख रहा है कि कुछ major gains हो नहीं रहे हैं. And probably in specific, I would like to ask कि mutual funds में invested है, अब to make a gain and redeem होने का क्या strategy होना चाहिए? Proper strategy. See, remain invested, yes, I would say yes. Reason being, और देखो आपका कोई thought process तो रहा होगा ना when you started or when you invested in this mutual fund, या किसी का मतलब what was the thesis when you invested? See, actually, my perception at that time was rather than keeping the money in bank and having a limited percentage of gain on that, most of the experts suggested to have it invested in the market, जहां आपको gains ज़्यादा हो सकते हैं, जहां आपका incremental value बढ़ सकता है. But over a period of time, पिछले 4-5 सालों में कुछ major gains मुझे लगा नहीं है. Particularly speaking, specifically about me, मुझे तकरीबन वही बैंक के बराबर का कुछ रिटर्न मिल रहा है. So then, what should be the approach? Because ये एक ऐसा मौका है जहां we are hitting a recession, and there are very clear indications wherein the recession is approaching, market नीचे जाने वाला है, and over a period of time, market इस मोड में रहेगा. फिर जब बढ़ता हुआ मार्केट हो, क्या उसमें इन्वेस्ट किया जा सकता है? ये तरीका सही है? Hello, can you hear me? हेलो, आवाज आ रही है हमारी? हेलो, Yes, yes. हाँ देखिए, ऐसा है कि ये जो आपने अपने मन में विचार बनाया है, देखिए इस संबंध में कोई भी हम लोग अपनी तरफ से आपको बहुत सजेशन इसलिए नहीं दे सकते क्योंकि ये बहुत ही एक रिस्की चीज होती है. देखिए ऐसा है कि आपने म्यूचुअल फंड में लगाया, म्यूचुअल फंड का डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो होता है और मेरा ये मानना है कि हर पीरियड में कुछ ना कुछ क्षेत्र आपका कोई ना कोई सेक्टर आउट परफॉर्म करता है. अब आप इस समय देख लीजिए कि आपके सामने ऑटोमोबाइल के जितने भी स्टॉक हैं सब अपने हाई के पास ही हैं. इतनी गिरी मार्केट में भी वो नहीं गिर रहे हैं. अब टेक्नोलॉजी के स्टॉक गिर रहे हैं, अभी इसी 8 दिन में 10% वो गिर गए. बट ऐसा नहीं है कि वो लगातार गिरते गिरते वो बिल्कुल जीरो हो जाएंगे. तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारे म्यूचुअल फंड भी कंटिन्यूअस इनमें करते हैं, उन लोगों के पास हमसे ज्यादा अच्छी रिसर्च की टीम रहती है और रिसर्च एनालिसिस करके उस पे पैसे को लगाते हैं. तो ओवर पीरियड ऑफ टाइम देखिए, फॉर द टाइम बीइंग तो नुकसान हो सकता है दिखाई पड़ रहा होगा, बट लॉन्गर टर्म में अभी तक तो यही हिस्टोरिकली रहा है कि म्यूचुअल फंड ने 10 साल के पीरियड में एवरेज रिटर्न 15% से 20% के बीच में दिया है. तो अब आपने कौन सा फंड चूज किया है ये डिपेंड करता है उसके ऊपर. बट अगर आपने इस समय मान लिया एग्जिट किया और आप राइट टाइम पर दोबारा एंट्री कर पाएंगे, ये अगर आप सोचते हैं कि आप कर सकते हैं, देन वेल एंड गुड. अगर बाय द वे आप नहीं राइट टाइम एंट्री कर पाए तो फिर उस समय क्या होता है, मार्केट में एकाएक चेंज आता है और मार्केट क्या होता है कि पहले से ही डिस्काउंट करती है हर चीज को. जैसे आज रिसेशन आने वाला है जैसा आप सोच रहे हैं, मैं कहता हूँ हो सकता है मार्केट ने इसको 6 महीने पहले, फंड्स ने 6 महीने पहले इसको एंटिसिपेट कर लिया और तब से ही वो सेलिंग कर रहे हैं.
तो अब हो सकता है कि अगले 3 महीने में 4 महीने में जब इसका पीक होने वाला हो और साइकिल चेंज होने वाला हो तो वो रिवर्स कर दें इसको। तो उस समय फिर हम अगर आप समझ सकते हैं कि हाँ नहीं ये राइट टाइम आ गया एंट्री करने का, आपके पास टेक्निकल कुछ स्टडी हो तो आप उसको फिर रिस्क ले सकते हैं, पार्शियल कर सकते हैं। अदरवाइज फिर आपके सामने ये समस्या हो जाएगी, अगर आप राइट टाइम पे नहीं एंट्री कर पाए तो फिर आपको फोमो वाली कंडीशन हो जाएगी और आप दोबारा हाई प्राइस से फिर एंट्री करेंगे तो आपका फिर जो प्रॉफिट बीच में होगा वो छूट जाएगा। तो ये टोटली आपकी अपनी उस पर डिपेंड करता है कैसे आप इसको मैनेज कर पाएंगे, कितनी आपकी अंदर स्किल है, कितनी आप स्टडी करते हैं मार्केट की। देखिए ये जो जनरल डिस्कशन हो रहा है रिसेशन का और इन्फ्लेशन का, तो आप ये समझ लीजिए इन्फ्लेशन की स्टार्टिंग हो गई थी दिसंबर जनवरी से ही और मार्केट में इम्पैक्ट गहराते हुए अब जाके आ पाया है। अच्छा दूसरी बात है कि अगर आपने जब आप पैसे को दिए फंड को तो फंड किसी न किसी उसमें लगाएंगे इंडेक्स में। अगर इंडेक्स फंड है आपका तो मेरी समझ से आपको बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। निफ्टी का इंडेक्स फंड है तो उसमें तो पैसा मोस्ट प्रोबेबली बढ़ता ही बढ़ता है। अगर एक साल कहीं बाई हुए डाउनफॉल आया तो अगले साल उसमें उससे ज्यादा की रिकवरी हो जाती है। बाकी एज यू विश। आई होप कि आपकी संतुष्ट होंगे हमारे आंसर से। जी थैंक यू सो मच। एक्चुअली मैं पूछने की कोशिश ये कर रहा था कि हम जो मार्केट से एक्चुअली पैसा किस तरह से बनाया जाए उसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो उसी संदर्भ में जैसे जनरलाइजेशन आपने सारा बताया, वो एक जनरल परसेप्शन इन्वेस्टर के लिए रहता है। बस एज एन एक्सपर्ट होता क्या है कि मैं कंपेयर कर रहा हूँ कि फर्ज कीजिए मैंने ये पैसा बैंक में रखा है, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मुझे बैंक इंटरेस्ट के साथ जो पैसा मिल रहा है वही मेरे को मार्केट में लगाने के साथ भी वही मिल रहा है, तो फिर मुझे मार्केट में लगाने की क्या जरूरत है। द रीजन आई एम गोइंग टू मार्केट इज बिकॉज आई वॉन्ट टू अर्न मोर। तो उसके लिए एग्जिट और एंट्री स्ट्रैटेजी होना जरूरी है और इस तरह का अप्रोच रखना चाहिए, या फिर जस्ट कीप इन्वेस्टेड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मार्केट नीचे जाएगा ऊपर आएगा अमूमन वही आपको तकरीबन उतना परसेंटेज के हिसाब से आपको मिल जाएगा, तो उसका कोई बड़ा फायदा इन्वेस्टर को दिखता नहीं है। देखिए मैं इस संबंध में आपको ये बताना चाहूंगा कि यदि आप कुछ चार्ट की स्टडी करते हैं, टेक्निकल स्टडी कर रहे हैं, देन यू कैन फाइंड आउट रेजिस्टेंस लेवल्स फाइंड आउट कर सकते हैं या फिर रिट्रेसमेंट को फाइंड आउट कर सकते हैं और जिस समय स्टॉक रिट्रेस करने लगे उस समय आप उससे एग्जिट कर सकते हैं। तो ये चीज हो सकती है, इट इज नॉट डिफिकल्ट बट इजी भी नहीं है, क्योंकि इसके लिए आपको एक स्टडी करनी पड़ेगी, कंटिन्यूस स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर आप स्टॉक्स में लगा रहे हैं देन यू कैन डू इट। अब आप फंड्स में लगाएंगे, म्यूचुअल फंड में लगाएंगे तो म्यूचुअल फंड में वेरियस टाइप की म्यूचुअल फंड है, किसमें आपने लगाया है और वो किस सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है इसकी जानकारी तो आपको ही होगी। तो उस बिंदु पर मैं ये कहना चाहूंगा कि आप स्टॉक की स्टडी करते हुए उसमें एंट्री और एग्जिट का पॉइंट निश्चित रूप से ढूंढ सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर म्यूचुअल फंड के संबंध में फिर आपको निफ्टी की स्टडी करनी पड़ेगी और निफ्टी की अगर आप स्टडी प्रॉपर करते रहेंगे तो आपको एंट्री का पॉइंट भी मिल जाएगा और एग्जिट का भी पॉइंट मिल जाएगा, दोनों पॉइंट मिलते हैं। थोड़ा सा बिलेटेड रहते हैं क्योंकि आप एग्जैक्टली टॉप पर तो नहीं अनुमान लगा सकते कि यहाँ से बिल्कुल गिरने वाला है, क्योंकि जब हायर हाई बन रहा होता तो हम लोग जितने भी टेक्निकल स्टडी करने वाले हैं वो वेट करते हैं रिट्रेसमेंट करने का। जब कहीं से हायर हाई बनने के बाद हायर हाई बनना बंद होता है और कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं टेक्निकल इंडिकेटर के, एमएससीडी है, मूविंग एवरेज है या पिवोट पॉइंट सिस्टम है, इनके बेसिस पर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि ये स्टॉक्स कहाँ से अब रिट्रेस होना शुरू हुआ है और अगर रिट्रेस हो गया है तो 20% रिट्रेसमेंट के बाद हम लोग मान लेते हैं कि अब इसमें और फर्दर डाउनफॉल आएगा, तो उसको फिर वहां से एग्जिट करने का प्रयास करते हैं। मैंने अभी एक एग्जांपल दिया था आपको वोकार्ड फार्मा का, तो वोकार्ड फार्मा 150 से 800 तक गया। अब 800 पर तो उसको नहीं कोई ये कह सकता था कि ये नीचे आ जाएगा, बट जब वो 600 आ गया तब उसके बाद ये स्पष्ट हो गया अब ये नीचे ही जाएगा, अब ऊपर नहीं जा पाएगा। वहां से उसके चार्ट डाउन ट्रेंड में आए और वहां से जो भी टेक्निकल बेसिस पे काम करने वाले थे वो लोग एग्जिट किए। लेकिन और फंडामेंटल पे जो लोग काम करने वाले उन्होंने वहां पर भी एग्जिट नहीं किया, वो अभी भी होल्ड कर रहे हैं। तो ये मेरा सबमिशन है, अगर आप चार्ट्स की स्टडी कर सकते हैं करते हैं तो वेल एंड गुड, नहीं करते हैं तो उसको करना शुरू कर दीजिए यदि आपको एंट्री और एग्जिट पॉइंट को प्रॉपर्ली आइडेंटिफाई करना है। थैंक यू।
और किसी को, महेंद्र जी आप अपनी बात को रखना चाहें तो रखें प्लीज। हेलो महेंद्र जी, आवाज आ रही है आपको? हेलो Sorry, Vajpayee ji, I was on call. So, are we done with कोई the बात नहीं। are we done with the questions or anything? हाँ नहीं हमने कर दिया, बात कर ली मुझसे, जो उनकी जवाब दे दिया मैंने क्वेश्चन का। चलो ठीक। महेंद्र जी आप बताएं, आपको कुछ पूछना है तो जल्दी से अपने व्यू को रखें। महेंद्र जी तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे, मुझे लगा ड्रॉप हो गए हैं। नहीं कनेक्ट तो थे वो अभी तो। अच्छा चलो कोई नहीं, जो उनका अगर सवाल होगा तो वो हैंडल्स पे हमारे पे पूछ सकते हैं। तो गाइज फिर से मैं एक बार रीट्रेट करूंगा कि वी normally do educational spaces on diverse topics or we bring industry veterans or sector experts. तो अगर आप लोगों को पसंद आता है तो हमारे साथ और उनके साथ जुड़िए so that the knowledge can be passed on to more people. Basically the idea is to help retail, help in the sense कि जो हमें हमारी स्टार्टिंग जर्नी में जो हमें चीजें डिफिकल्ट लगती थी या समझ नहीं आती थी, या हमने दूसरे की मदद से कंस्ट्रक्टिव वे में उनको पढ़ के इन्वेस्टिंग की बुक्स वगैरह या जो एक्सपर्ट हैं उनकी बातें सुन के जो हमने सीखा है वो शेयर करने की कोशिश करते हैं। इट्स नॉट लाइक कि वी नो एवरीथिंग, द लिटिल वी नो वी ट्राई टू शेयर। और जो लोग ज्यादा जानते हैं दे आर मोर देन वेलकम टू आवर फोरम टू ऐड वैल्यू टू अदर पीपल। तो गाइस हमारे हैंडल्स के साथ जुड़िए सो दैट यू गेट नोटिफिकेशन ऑफ आवर स्पेसेस एंड इट आल्सो गिव्स अस मोटिवेशन दैट वी आर वर्किंग गुड। So with this note, I would thank and conclude this spaces. Thank you so much.